So the world says कि Tehseen has the hardest job in the world because he has to make Rahul Gandhi look good. Rahul is one of the nicest people and smartest people. राहुल गांधी जी का इस वक्त का मुद्दा है कि वोट में चोरी हो रही है. आप उसे इत्तेफाक रखो ना रखो, वो कुछ पॉइंट्स रख रहे सामने. उनका काउंटर करते बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी. तो राहुल गांधी जी कहते देखिए हमने एक असेंबली सीट में देखा, यहाँ पर इस तरह से 6 लाख में से 1 लाख वोट जो है ये डाउटफुल है. अनुराग ठाकुर जी आके कहते हमने 6 लोकसभा देखा, यहाँ पर भी डाउटफुल है. तो ब्रो यू आर इन government. What the f is the government doing? An election commission. That's precisely the point Rahul Gandhi is making. Are you okay na? I use like the F word and all. You can beep it, huh? Because हमें FIR चाहिए हम पर. Oh नहीं, we are shooting in उत्तर प्रदेश. मुझे नहीं चाहिए. हमने कोई abusive word use नहीं किया उसको beep करो. We are shooting in उत्तर प्रदेश. Oh, I like it. I like it. What they see on their Instagram, they're like ये इंसान कैसे बोल रहा है? That they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. So if you had to give that one tip on public speaking to Rahul Gandhi ji, so that he is as good as Modi ji as an orator. दो, एक हिंदी में ज़्यादा बोले and speak calmly and distance your words. कहते हैं कि बीजेपी के पास WhatsApp यूनिवर्सिटी है. That's true. They do have it. तो जो कांग्रेस के पास क्यों नहीं है? Because I don't think कि अंकल थे, वो मिलते हैं, कहते हैं कि बेटा कांग्रेस सिर्फ करप्शन की दुकान है. यार आप अंकल्स को क्यों मिलते हो सर? क्योंकि अंकल मिलता है ना यहाँ पे. आंटीज नहीं आते? आंटीज बारे बात नहीं करते. आंटीज जो गांधी परिवार ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, देश बारे में कभी नहीं सोचा. देश हित सर्वोपरि है. I believe that. You believe in that. Nation first. People in India who are in middle class, they have this thought. हम बहुत मेहनत करते हैं, हम एक इनकम अर्न करते हैं, उसका टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता. I firmly believe वर्तमान सरकार का जो डाउनफॉल होगा वो निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री होगी. I'm saying this very seriously. और So कांग्रेस में इज्जत मिलती है बड़े लोगों को? सिर्फ बड़े लोगों को मिलती है. I think Congress everyone gets respect. सबको मिलती है. But I'm not in Congress, you know that, right? I know that. हाँ, मैं तो कांग्रेस में I know नहीं that, हूँ. but you do like support Congress and the हाँ, मैं ideology. उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ. मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए वोट किया आज तक. हाँ. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ उनकी आइडियोलॉजी से. और पता है आज तक मैंने किसी अलायंस पार्टनर को भी वोट नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया. लोग कहते हैं कि तहसीन पूनावाला जी का हार्डेस्ट जॉब. यार ये जी क्या होता है? इज्जत आती है बस. नहीं जी नहीं. Okay. तुम ब्रो हो यार, जी मत बोलो. So the world says कि Tehseen has the hardest job in the world because he has to make Rahul Gandhi look good. अच्छा. How do you look at it? क्योंकि आज के जो भारतवासी हैं, the way he sees like राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि उनकी नज़र में उनकी इमेज अच्छी नहीं है. There's only one man who's trying really hard on the national television कि he is good. नहीं. So how do you look at it? No, so let me be honest. मुझे genuinely ये लगता है, genuinely कि राहुल इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल एंड स्मार्टेस्ट पीपल. अब आप सिर्फ इस पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि ये पॉडकास्ट अभी आएगा, देखिए पूरा एजेंडा राहुल गांधी जी ने सेट किया और बीजेपी उसको फॉलो कर रही थी. मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ अगर राहुल गांधी जी इतने इरेलीवेंट है तो क्यों बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनको रिएक्ट करते? द फैक्ट इज़ दैट दे रिएक्ट टू हिम बिकॉज ही इज़ रेलिवेंट एंड ही इज टॉकिंग सेंस. अब आप देखो, आप ये सारी चीज़ मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी जी के बारे में मीम्स बनती है. देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट टू मेक हिम लुक द वे ही इज, बट फॉरगेट दैट. राहुल गांधी जी का इस वक्त का मुद्दा है कि वोट में चोरी हो रही है. आप उसे इत्तेफाक रखो ना रखो, वो कुछ पॉइंट्स रख रहे सामने. उनका काउंटर करते बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी. तो राहुल गांधी जी कहते देखिए हमने एक असेंबली सीट में देखा, यहाँ पर इस तरह से 6 लाख में से 1 लाख वोट जो है ये डाउटफुल है. मोटा मोटा ये बात है. अनुराग ठाकुर जी आके कहते हमने 6 लोकसभा देखा, यहाँ पर भी डाउटफुल है. तो ब्रो यू आर इन गवर्नमेंट. व्हाट द फक इज द गवर्नमेंट डूइंग? एन इलेक्शन कमीशन. दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट राहुल गांधी इज मेकिंग. नाउ मीडिया से किस तरह से स्पिन करती, अब क्या जवाब है राहुल गांधी के पास, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी ने बताए गड़बड़े. ब्रो यू फॉरगॉट, आप गवर्नमेंट में हो, टेक केयर ऑफ इट. सो यू नो इट इज अ मीडिया नैरेटिव अगेंस्ट हिम which is the way it's spun. But if you just take a pause back, forget me being pro-Congress or somebody not being pro. Just take a step back. The leader of opposition is saying, I saw one assembly seat, it doesn't add up. The government comes and says, we saw 6 Lok Sabha seats and yes, it doesn't add up and you are responsible. So I think
It's okay how the media spins it. But I also think, मुझे ये लगता है कि social media पे people are now saying that, hold on, this is not right. And that's why I think he's now setting the agenda, particularly in this session. So you say कि जो बहुत सारे लीडर्स हैं बीजेपी के वो Hey, one second, are you okay? Na? I use like the F word and all. We can beep it, huh? We can beep it in your podcast. बट कोशिश करते But हैं हम ना करें नहीं use. करेंगे beep because हमें FIR चाहिए हम पर. Oh, we are shooting. मुझे नहीं चाहिए. नहीं, we are shooting in उत्तर प्रदेश. मुझे नहीं चाहिए. हमने कोई abusive word use नहीं किया उसको beep करो. We are shooting in उत्तर प्रदेश. We cannot. Oh, No. oh, I like it. I like it. तो आपने कहा कि जो लीडर्स हैं बीजेपी के वो रिएक्ट करते हैं राहुल गांधी जी की टिप्पणी पर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके अंदर बात है क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं. Yeah, that's one. It's not just that. Even the उन पे ऑप्शन नहीं है ना, बिकॉज ही इज द लीडर, तो उनकी जो बात कही जाएगी उस पे दे विल हैव अ पर्सपेक्टिव. And that perspective wasn't that he's speaking untruth. The perspective was, what the hell are you showing one assembly? हम तो 6 लोकसभा अधिकारी इसमें गड़बड़ हो रही है. So you're playing to his agenda. Got it. Who's setting the agenda? ठीक है. फिर आपने बोला कि a lot of money has been spent to make Rahul Gandhi look the way he looks today on social media. On social media, I think his reputation is really up. I do agree, 4 or 5 years ago, जी. it was down in dumps. I can tell you, and believe me, I follow both sides, and I have brilliant friends on the BJP. मेरे बहुत सारे दोस्त, followers, supporters BJP से हैं. I'm the guy who builds bridges. I think his image has changed on social media. I'm not saying mainstream media. Social media has completely changed. Completely. So this narrative around कि Rahul Gandhi ji is the king of memes and the P word, the Pappu word. That's gone now. When have you last heard it? It was 4 or 5 years ago. I don't think it's happening after Bharat Jodo. So the Congress ID team has worked well? They have, no doubt. And they have. And why not? Look, tell me one thing. When we do this podcast, Ji. my team asked you to send reels. We were very clear in that conversation. Won't my team promote it? What's wrong in it? You must have an IT cell. As long as the IT cell is not abusive, not bullying people, not harassing men or women, I think it's fine to have one. There's nothing wrong in that. Why should that be a bad thing? Yes, the Congress has an IT cell. It's headed by a very capable Supriya Shineth, and I think it's good. I think it's good for the Congress and it's good for Rahul. That's not bad. And you know what? I do a lot of Twitter spaces, X spaces. I do with both Congress and BJP ecosystem because I don't want to be stuck in an echo chamber, right? And I see the Congress volunteers. They are as dedicated as the BJP volunteers. And I think that's phenomenal. I am putting this out as a tribute to the Congress volunteers on social media. They're such wonderful people. And even the BJP volunteers on their IT cell or their volunteers on the social media, such amazing, lovely people. And I've realized one thing. As a guy who goes across, who's very comfortable in Congress circles and BJP circles, I'm very comfortable. I have friends everywhere. I've realized, जो कॉमन इंडियन है ना, उसे बस कुछ ही चीज़ चाहिए कि यार अच्छा घर, बच्चों की भलाई, बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीज़ सुपरफिशियल है. कांग्रेस बीजेपी में जेन्युइनली कहता हूँ. अल्टीमेटली लुक, वी कनेक्टेड, वी डोंट इवन नो ईच अदर, वी मीटिंग ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सडनली I think you want the same thing for your kid that I want for Zurwan. Absolutely. Right? So there is a connection between us, right? So end of the day, it doesn't matter if you vote BJP or I vote Congress. What matters is, can we give Zurwan and your son a better life? Yeah. Period. Can we do that? I think that's all that people want. And I don't know if it's fatherhood. I don't know if it is something, if it is sort of going into more spirituality. But I've started to see the nice in people. यार लोग अच्छे होते, कोई वो नहीं होता. तो कब मुझे कोई गाली दे देता ना, तो मुझे अच्छा लगता है यार वो गाली दे दिया, मैं पूछता उसको क्यों गाली दे रहा हो, हम बात कर सकते हैं. इवेंचुअली से ओके सॉरी, वी डिडंट वांट टू अब्यूज यू. सो आई रियलाइज पीपल इनहेरेंटली आर गुड, दे आर नॉट बैड. ये हमने इसको कर दिया है. कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, कोई आपको कुछ नहीं दे रहा भाई. आप अपने परिवार का करो, अपने घर का करो, अपनी एरिया का करो, अपने शहर का करो, स्टेट का करो और देश का करो. एंड येस, सपोर्ट हु यू वांट टू सपोर्ट, बट डोंट किल ओवर देम. ट्रू. आपने कहा कि जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हों, अच्छा काम करते हैं फॉर श्योर, राइट. बट आई फील कि जो लीडरशिप है ना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि होम यू रिप्रेजेंट एंड उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके ऊपर. सो सिंस यू वर्कड विद राहुल गांधी सो क्लोजली, जो उनका चेहरा लोगों के सामने नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ द मीडिया, जैसे उनको पोर्ट्रे किया या फिर डिस्टॉर्ट किया गया, हु इज़ ही एज अ पर्सन, जो लोग नहीं जानते हैं. आपने वर्ड यूज़ करे कि ही इज़ वेरी नाइस, एम्पैथेटिक हो सकते हैं. ही इज़ वेरी एम्पैथेटिक. लेकिन ऐसे कोई चीज़ें जो कि हमें पता ही नहीं है, विच यू नो बिकॉज उनके साथ आप रह चुके हो. मैं
he's very very empathetic. मैं आपको एक दो स्टोरीज बता देता हूँ. I've seen him closely. I don't know उनको ये बात याद होगी कि नहीं, मुझे ये पता नहीं है. But 2009 की ये बात है. And that time I didn't know him. वो पुणे आए थे असेंबली इलेक्शंस में कैंपेन करने के लिए. कांग्रेस की सरकार दोबारा चुनी गई थी लोकसभा में, और महाराष्ट्र के जो चुनाव होते हैं असेंबली में लोकसभा के 6 महीने बाद होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा. तो वो महाराष्ट्र में कैंपेन करने के लिए आए थे, वो पुणे में थे. पुणे के एमपी थे जो लोकसभा के कांग्रेस के थे. एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम ये एसपीजी, उनकी गाड़ी किसी एक सीनियर लेडी थी, उनकी एस्कॉर्ट की एक गाड़ी उस सीनियर लेडी के पैर पर गई एंड दैट वुमन फेल डाउन. सो आई वॉज विथ हिज टीम, तो मैं भागकर उनको उठाया ये वो. एंड ही टर्न अराउंड एंड टोल्ड मी कैन वी टेक हर, एंड ही फेल्ट एंड ही वॉज राइट कि उनको फ्रैक्चर हुआ है पैर में. आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स दिस. तो ही सेड कैन वी टेक हर टू द हॉस्पिटल. आई सेड आई विल टेक हर एंड आई विल मेक श्योर शी इज़ ओके. यहाँ पर बात ख़त्म हो गई. अगले दिन मुझे उनका कॉल आता है, आरजी का. He got my number from his PA and he asked me how that lady was. Did I take her to the hospital? I think in the middle of elections, this is 2009, Congress is at its peak. Rahul Gandhi is slated to be the next prime minister. He's as popular as what Narendra Modi ji is today. I'm talking about 2009. And for that, to make that call, I think that's phenomenal. So I do see small things. Jo dikhata is very empathetic and I do like that about him. अब जो लोग आपको सुन रहे होंगे ना दिल से कि तहसीन जी दिस इज़ नाइस, क्योंकि आपने उनका ये वाला पार्ट देखा, बट देन व्हाट दे सी ऑन दैट इंस्टाग्राम, दे लाइक कि ये इंसान कैसे बोल रहा है. इनको तो फॉर एग्जांपल ऐसा कई बार हुआ है कि कुड नॉट आर्टिकुलेट हिज थॉट्स वेरी वेल. जो वो कहना चाहते थे वो सही से ज़ुबान तक नहीं आ पाया. सो यू आर वेरी गुड विद द वर्ड्स, यू नो हाउ टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स. So if you had to give that one tip on public speaking to Rahul Gandhi ji, so that he is as good as Modi ji as an orator, because उसकी ज़रूरत है. अगर इलेक्शन में वो आ रहे हैं, he might be empathetic, might be very kind, लोगों को काफ़ी अच्छा ध्यान रखते हैं, बट अगर वो सामने लोगों के नहीं आ रहा है, because he's not that vocal about his things, तो क्या टिप होगी? दो, एक हिंदी में ज़्यादा बोले and speak calmly and distance your words. And think what you say, because sometimes it is misinterpreted. Because कभी कभी क्या होता है, हम सेम चीज़ अगर अंग्रेज़ी में बोलते हैं उसका सीधा वही अनुवाद हिंदी में करते, तो इट डजंट मे नॉट साउंड द सेम, और मे कॉज द बीजेपी टू कॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. जो वो चाहते हैं, एंड वो पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम. सो जस्ट थिंक दैट कैन द बीजेपी और एनीबडी एल्स यूज दिस अगेंस्ट मी. बस उतना ही सोचे. Baki, I do like the fact that he has a certain amount of rawness where he's unafraid to say things the way they are. That I do like, and he should not change that. When you say about the empathy part, I also remember जो उनकी यात्रा हुई थी भारत जोड़ो. हाँ, उस यात्रा में करीब 400 किलोमीटर उन्होंने यात्रा 6,000 किलोमीटर रोज़ के 25 किलोमीटर. लोगों ने बोला कि he was able to connect with a lot of people. बहुत अच्छा रहा. लेकिन वो कनेक्शन वोट्स में तब्दील नहीं हुआ. सो इज़ इट लाइक कि आज इंडिया इज़ लुकिंग फॉर रिजल्ट्स, डिलीवरी दैन जस्ट द इमोशनल कनेक्ट? बोथ. बट देखिए, कांग्रेस ऑल्सो गॉट 100 seats, 99 इन द लोकसभा, विच इट वॉज अ पार्टी दैट वॉजंट डूइंग वेल. और बीजेपी को 400 पार करना था. प्रधानमंत्री जी का वो नारा था अब की बार 400 पार, वो नहीं हुआ. सो एट सम पॉइंट ही डिड स्टॉप, ही डिड रैली पीपल अराउंड हिम. और लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने एजेंडा सेट किया राहुल गांधी जी ने. अब उसके बाद द कांग्रेस हैड लॉट ऑफ सेटबैक्स, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बट ही इज अगेंस्ट ट्राइंग टू सेट द एजेंडा. सो आई डू थिंक दैट भारत जोड़ो वॉज अ मेजर रोल कि कांग्रेस को 99 सीट्स मिले, और एक जो उनका इंडिपेंडेंट आया. तो एक्चुअली कांग्रेस 100 पे. So you feel that उस यात्रा की वजह से we did get one of the reasons. Elections एक वजह से नहीं जीते जाते या एक वजह से नहीं हारे जाते, बहुत सारे फैक्टर्स होते. एक था भारत जोड़ो यात्रा, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था, but other factors were there. People were afraid when the prime minister said अब की बार 400 पार, कि कॉन्स्टिट्यूशन. They were afraid. या कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, क्योंकि बीजेपी में तो लाउड माउथ से ही, कांग्रेस में भी है,
बीजेपी में भी है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जैसे कौन अलाउड माउथ बीजेपी में? बहुत सारे बीजेपी में, मैं बताऊंगा आपको, भी आज तो करेंगे अब, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हुई। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर टू क्लैरिफाई 3 or 4 टाइम्स कि हम नहीं बदलेंगे। फिर किसी ने कह दिया कि अगर 400 सीट मिलेगी तो हम पीओके ले आएंगे। लोग सोच रहे थे ब्रो 400 सीट और पीओके का क्या मतलब है। सो देयर वर पीपल हु वर आल्सो सॉर्ट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स जो एजेंडा को हेल्प किया। सो द लॉट वन वाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक एजेंडा था, भारत जोड़ो था। Third था that there was unity amongst the opposition alliance much better, what was called the India alliance, as opposed to previously, तो वो votes नहीं बटे. So a lot of factors that helped in the alliance get these many seats. तो हम इसे आम आदमी हैं, हमारे सामने एक व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड, तो कहते हैं कि बीजेपी के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। That's true, है ना? they do have it. तो जो कांग्रेस के पास क्यों नहीं है? Because I don't think कि कांग्रेस का वो सिस्टम है। But And it I works, also, right? It works. It- तो फिर क्यों नहीं करते? बट आई डू थिंक कि अब जो है ये व्हाट्सएप वाली बात खत्म हो रही है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सब चीज़ जो व्हाट्सएप आता है वो सच नहीं है। सो आई डू थिंक दैट्स हैपनिंग। इट जस्ट केम एट अ टाइम। देखो अगेन, आई डोंट बिलीव जस्ट अ व्हाट्सएप कैन हेल्प यू विन, राइट? इट्स ऑल्सो द prevailing situation around you, lot of factors, and then the WhatsApp comes and it adds, it's the final straw that breaks the camel's back. वो आखिरी एक चीज़ होती है, बट उस चीज़ को समझने के लिए you're already going through something, you're already thinking that, और फिर जब वो WhatsApp आता है you think that हाँ देखो यही सच है, and you feel good. But I'll tell you something, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, बीजेपी के जो सपोर्टर्स है सोशल मीडिया पर, या जो उनके ओवरऑल सपोर्टर्स है, मुझे कभी भी, मैं बहुत सीरियसली ये बात कह रहा हूँ, मुझे कभी भी बीजेपी के किसी भी समर्थक से नफ़रत नहीं मिला है। आई इंटरेक्ट विद देम, आई टॉक टू देम, इनफैक्ट दे अग्री विद द रैशनल पॉइंट्स। आई थिंक मोस्ट इंडियंस आर रैशनल, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। तो ये भी जो एक इमेज बना है कि बीजेपी के सपोर्टर्स सिर्फ व्हाट्सएप पे चलते हैं, दे कैन बी फूल्ड ईजिली विथ व्हाट बीजेपी पुट्स आउट, I don't think that's true. I think BJP के जो supporters हैं are some of the harshest critics of the BJP, of the Prime Minister, of the Finance Ministry. They may like the Prime Minister a lot, but they are very, very critical on a lot of things, and I respect that about them. मैं उसकी बहुत आदर करता हूँ इन चीज़ों की. So I feel कि youngsters like us, हम लोग बहुत ही आसानी से get influenced by the videos, by the podcast. जो देखा हमने न्यूज़ पे, तो हमने लोगों से पूछा जो कि 60 इयर्स प्लस की उनकी एज है, जिन्होंने बहुत सारे दशक देखे हैं जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी थी और बीजेपी की पार्टी भी थी, कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे नाम आए, एंड व्हेन दे डिड नॉट से कांग्रेस, वी आस्क्ड देम व्हाई, कि आपने उनको सपोर्ट क्यों नहीं करा। तो आई रीड इट आउट फॉर यू कि उन्होंने क्या बोला। एक अंकल कहते हैं कि दिवस, कांग्रेस ने ना देश का बंटवारा करवाया, कांग्रेस ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए पार्टीशन के टाइम। ये नरेटिव फ्लोट होता है इन द कॉन्वर्सेशंस। उसमें लाइक पार्क में जाओ, अंकल बैठ के बात कर रहे होंगे और ये बातें उड़ जाती हैं। क्या टेक है आपका इस पर, जिससे कि लोगों को आए समझ कि नहीं यार ये एक नरेटिव था, इसके बाहर भी दुनिया है, या फिर व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, ये ज़रूर ये नरेटिव है कि कांग्रेस वाज एटलीस्ट अमंगस्ट सर्टन सपोर्टर्स दैट द कांग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइड ऑफ द नेशन। ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नहीं है। कांग्रेस वाज द लास्ट टू एक्सेप्ट पार्टीशन, और उसमें से भी सबसे लास्ट थे गांधी और नेहरू जो पार्टीशन एक्सेप्ट किए। बट अब वो नैरेटिव बन गया है। आप उसको, ये भी नैरेटिव है कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री नहीं बनना था, वल्लभ भाई पटेल जी को बनना था। ये भी एक फेक नैरेटिव है। फेक कैसे कह सकते हो आप? मुझे बता दो, गूगल करते कौन सी डेट पे इलेक्शन हुए कि वल्लभ भाई पटेल जी थे। कांग्रेस के 1920s के इलेक्शंस डॉक्यूमेंटेड है, ये इलेक्शन क्यों डॉक्यूमेंटेड नहीं है? देयर वाज नो सच इलेक्शन। कांग्रेस के जो स्टेट यूनिट्स है उनको ये अधिकार ही नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करे। अच्छा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फिर लोग कहते, जब भी मैं टीवी पे बात करता हूँ, कहते नहीं इलेक्शन जो था वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का था, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट डिफैक्टो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक बात है। तो आज़ादी के समय आचार्य जी ही थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो बेचारे नहीं बने। सो ऑल ऑफ दिस इज रबिश। द स्टेट यूनिट्स हैड नो राइट। लास्टली, नेहरू जी और लियाकत अली खान तो 1946 में अपॉइंट हुए थे प्राइम मिनिस्टर्स। दे वर अ डोमिनियन स्टेटस। फर्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1951, तो 1946 में ही अपॉइंट हो गए थे।
So then how can this election happen when they were appointed in 1946? लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना कि हाँ ये पार्टीशन हो जाए. आपने कहा कि they were like last ones to accept it. Yeah. तो they didn't have an option to say no. They didn't, because by then that was the way the British said that we will leave the country. In fact, independence was hurried up. It was supposed to be slightly later. So the British said ये आपको करना होगा, and we left. And आपको एक चीज़ बताऊँ मैं genuinely ये चीज़ कह रहा हूँ. ये partition हुआ बहुत, there was so much of bloodshed. Yeah. But look at India today, right? Compared to Pakistan, दोनों का जन्म एक ही दिन पे हुआ. आज कहाँ है पाकिस्तान? It's a failed nation without a democracy. And look at where we are. तो और कुछ नहीं तो इस बात का तो श्रेय हम दे सकते हैं नेहरू को कि उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की भारत के अंदर, जिसके कारण हम आज़ादी से जो चीज़ चाहे कर सकते. दैट इज क्रेडिट टू नेहरू. यू कैन, एवरी ग्रेट मैन विल हैव हिज फ्लॉज. आई ऑनेस्टली बिलीव मोदी जी इज अ वेरी will go down in history as a prime minister. But in this historical context of Modi ji's tenure, जब भी वो समाप्त होगा, and may he have a very long and healthy life in service of our nation, there will be people who look back at his tenure and be very, very critical, and there will be people who will like. Somebody like me who wears a political cap, forget the biases. I will love what he did with 370. I will be very upset with what he did with demonetization. I will love that Ram Mandir was solved. I will hate that he wasn't strict enough on many issues that led to hate speeches and divide. There will be a legacy that will be discussed, and that's fine for all great men. And I do believe Modi ji is a great man. I do believe that very firmly. So I think it's great. Great men should be completely dissected. But that would be unfair on Modi ji if he just pick up one aspect of his life and say, यार इसने सिर्फ नोटबंदी की, बहुत लोगों को परेशान किया. That will be unfair, right? Correct. You have to see all aspects. You have to see it completely. You can't just see one aspect of a great man who's governed for so long and then pick up that aspect and make that the person. If that applies for Modi ji, that should also apply for Nehru ji. That's what I tell people. Interesting. The reason why I asked this question because ये लाइनें, ये narratives like चलते रहते हैं हमारे आसपास. And the moment we like discuss this, आपके ज़रिए जो एक perspective मिलता है, that makes you think कि अच्छा हाँ ये भी एक नज़रिया है देखने का, than the one offered to us by the conversation that are floating around us. मैं फर्मली बिलीव करता हूँ. मुझे मतलब इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है. मतलब 100% विद एवरी मॉलिक्यूल, एवरी इलेक्ट्रॉन इन माई बॉडी, एवरी एटम इन माई बॉडी, आई बिलीव दिस वेरी फर्मली कि कोई भी प्रधानमंत्री देश का बुरा नहीं चाहता है. उनसे गलती होती है 100%, एंड वी कैन डिस्कस दैट. नो प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स हिज कंट्री और हर कंट्री टू सफ़र, पीरियड. दे ओनली हैव द गुड एट हार्ट. चाहे फिर वो नेहरू जी हो, चाहे फिर वो मोदी जी हो. You can't. When you're in that post, you only want the best. Yes, your decisions can be questionable, can be questioned, and must be questioned. We are a democracy. The Prime Minister is one amongst equal. The first three words of our constitution are we the people. हम भारत के लोग. Not मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति. So yes, we the people have a right to question them. But अगर आप मुझे आज, और मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मुझे कहो कि मोदी जी देश का बुरा चाहते, मैं नहीं सोचता. मैं जानता हूँ कि वो देश का अच्छा चाहते. हाँ, आई डिसएग्री विद द वे ही वांट्स टू टेक इंडिया फॉरवर्ड. बट इंडिया वो भी आगे ले जाना चाहते हैं, मैं भी आगे ले जाना चाहता हूँ. हमारे रास्ते अलग हो गए. यू मीन कि एज वी लुक बैकवर्ड्स, मतलब आज हम 70-80 साल जब पहले पहुँच जाएंगे, तो वी डोंट नो व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली. वी जस्ट नो अ स्टोरी अराउंड इट, एंड उसको हम लोग आज लाइक डाइसेक्ट कर रहे हैं कि ये सही था, गलत था. जैसे कि हम बात करें 2025 की, जो हम आज बात कर रहे हैं, आज से सपोज 50 साल बाद इफ़ पीपल टॉक अबाउट मोदी जी एंड से कि इन्होंने ये सही नहीं किया, ये गलत नहीं किया, तो प्रॉब्ली वी वुड नो इट कि क्या उस समय का दौर था. राइट. सो वो कहावत है ना कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर. तो एक इतिहास है, आज को इतिहास लिख रहे हैं, दैट्स फाइन, एंड इट शुड बी डाइसेक्टेड. आई थिंक as a nation, we should be aware of our past. We should discuss our past, but I think we should spend more energy on our present and future. एक और अंकल थे, वो मिलते हैं, कहते हैं कि बेटा
कांग्रेस सिर्फ करप्शन की दुकान है। यार आप अंकल्स को क्यों मिलते हो सिर्फ? क्योंकि अंकल मिलता है ना यहाँ पे। आंटीज नहीं आते? आंटी बारे में बात नहीं करती। आंटी बारे में बात नहीं करती हैं। वो कहते हैं कि बेटा लाइक 2G स्कैम था, कोल स्कैम था, CWG स्कैम था। करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है। सो व्हाट इज़ द नरेटिव अराउंड करप्शन एंड द कांग्रेस रेजिम? तो फिर कॉन्विक्ट क्यों कोई नहीं हुआ? ये सरकार उसी पे आई, क्यों कॉन्विक्ट नहीं कर पाई? देखो स्कैम तो हुआ था, नहीं हुआ था। 2G के बारे में आई वांट टू से समथिंग. 2G एंड न्यूक्लियर डील, इट वाज अ डिससर्विस टू आवर नेशन जो इस तरह से उसके इशू बनाए गए थे. आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस. पहले मैं न्यूक्लियर डील पे बोलूँगा. इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू NSG, द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. उसके बावजूद मनमोहन सिंह जी ने वर्क विद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एंड ओबामा एंड गॉट अस द 123 एग्रीमेंट, जहाँ पे पूरे देश ने, सभी मुल्कों ने, जो न्यूक्लियर कंट्रीज एक्सेप्ट किया कि भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होने का अधिकार है. एंड द US agreed to give us न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एंड द 123 एग्रीमेंट वाज साइंड. उसके खिलाफ जो लेफ्ट और बीजेपी पार्लियामेंट में की और उस डील को ब्लॉक करने की कोशिश की, आई विल नेवर इन माई लाइफ एक्सेप्ट दैट. दैट इन माई ओपिनियन वॉज अ ग्रेट डिससर्विस टू दिस ग्रेट नेशन. भारत को वो जो स्थान मिला है विश्व में किसी देश को नहीं मिला था जो मनमोहन सिंह जी ने दिलवाया था भारत को. दैट न्यूक्लियर डील. We are not even now a signatory to the NSG, the nuclear supplier group. Second, 2G पे आते हैं. 2G, when Supreme Court came down because of this Vinod Rai, the CAG at that time, बहुत आपके पॉडकास्ट के लोगों को नहीं पता होगा तो मैं I'll go slowly. भारत में एक संस्था है CAG, which audits governments. The chief auditor at that time was a gentleman called Vinod Rai, who did massive disservice to India. He did so much disservice to India. I have so much, there are very few people I don't appreciate. I'm very nice and kind to people, but a few people I don't appreciate. I think his disservice to this nation will go down in history as what he did. He came up with a report called, in 2G there was a presumptive loss. Now, मैं हमेशा ये कहता हूँ, या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो नहीं हो. हाफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. या तो लॉस है या तो नहीं है. Presumptive loss क्या होता है? What the fuck is a presumptive loss? That means you could have made a loss, but the fuck you didn't make a loss. So then why are you making a report? And he put this number of 1,76,000 crores. The basis of this presumptive loss was a policy called first come, first serve. या ये कहा गया था कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज पहले आएगी उनको टेलीकॉम लाइसेंस मिलेगा other than bidding. The present government, ND, has followed that policy. But first come, first serve was not the policy of UP and Manmohan Singh. It was the policy of Atal Bihari Vajpayee ji. And why did Atal Bihari Vajpayee ji, one of the wisest prime ministers of this country, have this policy? Because the then TRI, so telecom comes under the TRI. The then TRI chairperson said that if India has to grow as a GDP, mobile density has to increase. And for mobile density to increase, we must have India as a poor country. India still is a mid-income country. In 2004, 2002, 2003, we were a poor country. Every person must have a mobile, and to have a mobile rates must be very less. Remember the day when mobiles just came out, it was 32 rupees an outgoing, 16 rupees an outgoing, 8 rupees an incoming. Right? 8 rupees an incoming. So, unless you didn't give people mobiles in their hand, GDP would not grow. For every certain number of users going up, the GDP would go up by 1%. Hence, you allow telecom companies not to bid, save the money on bidding, rather get the rates low. That was the rationale behind the policy. This policy was accepted by Vajpayee ji, carried forward by Manmohan Singh ji. As a result of which, the first come, first serve policy was made, telecom density increased, and we have the cheapest telecom rates in the world. Yeah. To see Anna Hazare and those brand of people, including Arvind Kejriwal, do the kind of nonsense they did, and I dislike Anna Hazare passionately. Passionately, he comes from my city of Pune. These people and that Vinod Rai have harmed my country and my country's economy. And I'm saying this with the greatest of respect to the Honorable Supreme Court. And I say this even in terms of when the courts have gone against Modi ji on certain issues. It is the court must learn to remain in this Lakshman Rekha. The courts cannot cancel policies. Governments are elected on policies. The courts can look into whether the policy has been arbitrary. What are you hinting at? Sorry? What are you hinting at? Which policy? When the courts cancel the first come, first serve policy and they made the governments go for a bidding. Who's the courts to cancel? I am the executive. I am elected by we the people.
They've elected me on this policy. Who are you to cancel? Is the policy against the Constitution of India? Then you can. I want to give telecom free. I want to give water free. Is it good or bad can be a debate. I agree on that. Who's the court to say I can't give something? But people are electing me because I'm giving them. So this business of what the courts did, I'm so disappointed with what the Honorable Supreme Court did. We have not seen so many zeros in our life. Bro, it's presumptive loss. So at some point, and I'll tell you what, coming to today's age, and I've said this many a times, and when I'm in government, there are two reforms I will bring right away. One is bureaucratic reforms. The first thing that I will do, my first decision when I'm in government, my first decision, first, not my second, not my third. Hear me out. My first decision is cut bureaucracy by 50%. Period. They can go to any court they want, these babus. I don't care. Because for every solution in our country, we have a problem created by a babu. Second decision, very clear. This business of courts will be put in check, where I will not go against courts having a collegium system to appoint judges. But finally, the collegium, the judges that they select, will have to report to a parliamentary committee, maybe headed by a leader of opposition, where these judges will have to show their integrity towards the Constitution of India. Let it be headed by a leader of opposition, because the courts cannot be above law. Period. So I will not remove the collegium system. It's a system that's maintained independence of judiciary, and I respect that. But whoever they select in that collegium, they will have to come to the parliament, and they will have to depose before parliament, headed by a leader of opposition, and show their commitment to the constitution. And therefore, the collegium can select many more people, who then parliament will strike down and have the right number of people to have. These are two very important reforms I will do as my first two reforms. The third reform I will do, again with courts, is we will have multiple Supreme Courts, North India, South India. Multiple Supreme Courts. Allow me to finish. North India, South India, East India, West India. Okay. So people don't have to travel all the way to Delhi, which will be a final court of appeal. And the court in Delhi, the Supreme Court, will become the constitutional court. It will only sit on constitutional matters. So we'll increase the number of judges right away. That's what I will do. I will increase the number of judges. So South India will have its own Supreme Court. So you go to your lower court, trial court, district court, sessions court, high court bench, Supreme Court, South India. Khatam. That's where it ends. West India, East India, North India. But if there are absolute important constitutional matters, it'll come to the Constitutional Court. That will sit only on matters of constitution. Today, a Supreme Court is sitting on bails. You see, if your age is young, they may not understand it. But let me just put it. Today, the Supreme Court is not supposed to sit on bail. Bail should be given by lower courts. Supreme Court sitting on it. एक गरीब आदमी कैसे आएगा Supreme Court? So lower courts को भी ठीक करना है कि freedom is most important. Judges bail deny करते थे. क्यों? Unless it's serious offense, murder, rape, you're denying bail. तो ये सारी चीज़ों को रिफॉर्म करना मेरी बहुत द कंट्री आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर आवर कंट्री सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम फोकस्ड ऑन ये मुझे अब देश के लिए करना है सो दीज आर माय डिसीजंस दैट आई विल टेक इंटरेस्टिंग नेवर थॉट फ्रॉम दिस लेंस एंड सर्टनली आपको पता होगा कि ये कितना प्रैक्टिकल है ये एग्जीक्यूशन में हो पाएगा नहीं हो पाएगा भाई मैं जब पावर में आऊँगा मैं जब गवर्नमेंट में आऊँगा कब आ रहे हो वो अब उसकी तैयारी हो गई है मैं ये बात कह रहा हूँ और मैंने ये बहुत जगह क्या मैंने लिखा है ये पहले 2-3 रिफॉर्म्स हो गए तो मैं आऊँगा इसके बेसिस पे पावर में कि जनता मुझे चुनेगी मैं बिल्कुल आई एम नॉट टेकिंग अवे द पावर्स ऑफ कोर्ट्स आई एम गिविंग कोर्ट्स मोर पावर मैं तो और सुप्रीम कोर्ट क्रिएट करूँ मैं तो और जज बट देयर विल बी अ लाइन मेंटेन्ड एंड दैट लाइन विल बी वेरी वेरी थिक अ वेरी थिक लाइन मेंटेन नॉट अ थिन लाइन सो आई एम गोइंग टू टेक दीज डिसीजंस आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट और सबसे पहले तो बाबू जाएगी 50% पहला ऑर्डर बाबूज कट बाबू विल नॉट वोट फॉर यू दैट्स ओके मुझे देश की जनता वोट करे देखो पता है क्या हो गया है मैं जैसे मैंने कहा फॉर एवरी सोल्यूशन वी हैव अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बाबू तो ये थोड़ा बाबूदम कम करना है टैक्स रिफॉर्म्स इज इंपॉर्टेंट जो मैं करूँगा सो दीज आर थिंग्स दैट आई हैव टू डू फॉर आवर कंट्री एक और पर्सपेक्टिव था जहाँ पे कहते हैं जो गांधी परिवार ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है देश बारे में कभी नहीं सोचा कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने बच्चों को ही पीएम बनाना चाहते हैं ये नैरेटिव्स भी हैं तो संसद में क्या कहना चाहेंगे आप गांधी परिवार का कौन सा व्यक्ति पिछले 30-35 सालों में पीएम बना है देखिए ये सब ठीक है बट ये जो मतलब पावर वॉज देयर विद देम ये तो मानना पड़ेगा
इसमें कुछ Yeah, बुराई I'm नहीं not denying that, but they've not made anyone PM, na, last 30, 35 years. But again, I'll say one more thing on this. ये प्रॉब्लम हमारे देश में है कि फैमिली स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं. और देखिए, इट्स नॉट जस्ट कांग्रेस. आई गेट दैट कांग्रेस गेट्स द ब्लेम फॉर इट. बट आप बीजेपी में देखो कितना परिवारवाद है. वहाँ का है. टोटल परिवारवाद है. आपके बीजेपी में कितने आपके लीडर्स बता सकते मेरा हो? बीजेपी नहीं है नहीं पहली नहीं, बात. मतलब आपके बीजेपी मेरा बीजेपी में कितने सारे तो नेताओं के बच्चे ही आ रहे हैं. और ठीक है, बीजेपी अपने आप के परिवारवाद को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं. हमारा परिवारवाद नहीं, क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनेगा ब्रो. एमपी तो वही इसीलिए बन रहा है ना क्योंकि उसके डैडी मम्मी एमपी थे या चीफ मिनिस्टर है. एमएलए तो इसलिए बन रहा ना क्योंकि डैडी मम्मी उनके ससुर उनके दादाजी वो है. गिव सम नेम्स. All names. Let's start. Anurag Thakur ji, father was chief minister. Son is and second son is in BCCI. Pankaja Munde ji, minister in Maharashtra. Father was deputy chief minister. Poonam Mahajan, Pramod Mahajan's daughter. You tell me, I'll tell you the names. Dushyant Raje, Vasundhara Raje's son. कितने नाम बताओ आपको. आपके लोकल उत्तर प्रदेश में देख लो. उत्तर प्रदेश के आपके यहाँ गूगल करो, उत्तर प्रदेश परिवारवाद इन बीजेपी करो, गूगल मेरे सामने करो, आप नाम पढ़ो. अब मैं आपके बॉल में कोड डालो, रिकॉर्ड दिस, करो गूगल. उत्तर प्रदेश, पुट यूपी बीजेपी. We'll do a screen recording as well. Yeah, यूपी बीजेपी. Okay, one second. लीडर The net is on over here. The net is off over here. मैंने ऑफ किया था नेट. हाँ जी बताइए क्या करना है. सर्च करो यूपी बीजेपी परिवारवाद. यूपी बीजेपी परिवारवाद. You want people to like search this. करो. Because I'll say it may not be a thing. आप करो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड. क्या हेडलाइंस. यूपी में सपा का परिवारवाद 100%, भाजपा का 10% सफल. ये पहला सफल. हाँ सफल. नहीं, बट परिवारवाद में टिकट्स कितने लिए. यूपी बीजेपी परिवारवाद असेंबली टिकट्स. असेंबली टिकट्स. बट पुट बीजेपी. बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी जमकर परिवारवाद. राजनाथ के बेटे सांसद हुकुम सिंह की बेटी को मिला टिकट. ये तो 9 वर्ष पहले की बात है. भाई रिसेंट देख लो न्यूज़. असेंबली इलेक्शन देख लो. ठीक असेंबली है, मैं इलेक्शन बात मान गया. पीपल विल सर्च एंड दे विल गेट टू नो. ये लोकसभा है. पंकज सिंह ऑफ कोर्स इज असेंबली. बट अब देख लो इसके अंदर. तो अब यूपी में ही देख लो. अच्छा, बीजेपी की खासियत है, अगर वो कांग्रेस में तो परिवारवाद ही है, अगर बीजेपी में आता तो परिवारवाद गोज अवे. ये जितने भी बीजेपी में आए कांग्रेस के नेता, दे आर नॉट फ्रॉम फैमिलीज. अच्छा, एंड ऑनेस्टली से कीप कांग्रेस एंड बीजेपी असाइड, क्योंकि ये दोनों नेशनल पार्टीज में एक सिस्टम होता है पार्टीज का डिसीजन लेना. इवन दो मोदी जी इज द मोस्ट पावरफुल इन बीजेपी, ही हैज टू गो थ्रू द बीजेपी political committee, which is, and even the Congress, the Gandhis are most powerful, they have to go through their political committee. The BJP committee is called the Parliamentary Committee. The Congress is called the CWC. So they have to go through these two committees. So even if they are powerful and get their way through, they have to formally go through a committee. Let's look at all your regional parties across the country. They're all family bastions. North India, Umar Abdullah Saab, Farooq Abdullah Saab, his kids will come in, Mehbooba Mufti, Jammu and Kashmir. आप पंजाब देख लो, द बादल्स. आप उत्तर प्रदेश देख लो, अखिलेश जी वगैरह, मायावती जी का भी आकाश. आप हाँ अखिलेश जी. हाँ, अब फिर आप ये देखो, बिहार देख लो. फिर आप पूरा देश में देख लो, जितने भी रीजनल पार्टीज इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, द सांगमाज. साउथ इंडिया में चले जाओ, चंद्रबाबू नायडू एंड हिज सन, KCR, KTR, DMK, अक्रॉस अलायंसेज. इट्स नॉट अ बीजेपी इज होली, बीजेपी उनके साथ अलायंसेज में. महाराष्ट्र देख लो. So we do have a problem of family rule. See, and the thing is, the problem इसके साथ क्या होता है, ये सारे जो बच्चे इसलिए वहाँ पे बिकॉज उनके डैडीज़ के बच्चे या उनके दादाजी के बच्चे. बट वी फॉट वेरी हार्ड टू गेट आवर इंडिपेंडेंस. पावर शुड बी विद अस. तो मैं इसके खिलाफ हूँ. वॉट इज़ देयर, आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू, व्हाई आर दे देयर? One thing, just a question. You say कि power should be with us. With us, power be the people. Be the people, okay. Yeah, power should be with the with ये families, they are running it as a firm, right? Look at all the regional parties. Look at TMC, Mamata ji, Akash Banerjee. Across. How long are you going to tolerate this? Why are these people in power? So at some point we will have to start having this conversation as a country. Regional parties and even the national parties, क्योंकि बीजेपी में भी MP, MLA सारे उनके बच्चों को ही देते हैं.
or at least 40-50%. Now BJP may say statistically wise we are less, but it's increased manifold from what the BJP originally was. कि परिवारवाद के खिलाफ हो गया. This has to end. It can't be a political party, can't be एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. Families run it. कर्नाटका देख लो, डेवे गौड़ा फैमिली. तो हर जगह है ना, अगर हम बात करते हैं नेपोटिज्म की, It's true. Look at your film industry. Look at your. अब वो मुंबई में paparazzi देख लो. He will click some kid because his parents are famous rather than the chess grandmaster or somebody who's come back from space. So I do think that you see the list of the billionaires in India. All kids of billionaires. For me, अगर next generation competent है and अगर वो star kid है या फिर whatever, it's fine. अगर suppose आज if I am a doctor and my son is a doctor, it's fine ना, he will carry the legacy, उसको patience, उसके लिए setup मिलेगा, that's perfectly fine. But अगर next generation competent नहीं है और फिर भी उसको वो seat मिल रही है, that is the problem. There's a difference in the two, and let me explain to you why. क्या? By saying this, we've legitimized the fact that we will just hand over things to people below. Even if we leave politics out, let's look at films. Mm-hmm. For an ordinary person, say from Noida or Greater Noida, to go to Mumbai to struggle to make it, even if he or she is more talented, what is your definition of capable? Let's say there's a young guy or girl from Greater Noida who has to go to Mumbai, middle class family. The chances of him or her making it are much less. Now, please don't give me that one odd name as Rajkumar Rao or Shah Rukh Khan or Akshay Kumar. Chance kam hai. But compared to these people get launches, these people get things. Agree. So the paparazzi knows them, the paparazzi is shooting these people. Look at the billionaires. Why is India not creating self-made billionaires like Elon Musk? Whether you like Elon or not, why are all these billionaires the kids of rich parents? Mm-hmm. That's the problem. That's happening because we have a flaw in our system and we got to accept this flaw. That we are okay with families, with kids taking over the business under the guise of, oh, they're capable. No. A race must be equal for everybody. Everybody must start at the same point. And the only reason that one person goes ahead in life should be merit, not where you're born. I am very clear on this. True. अगर आप ये चीज़ भारत में इसको नहीं देखेंगे, जो चीज़ पॉलिटिक्स से शुरू हुआ भारत के अंदर, वो आज सब जगह पर फैल चुका है. आपकी फिल्म इंडस्ट्री में फैल चुका है. आपकी कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज़ ऐसी है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कुछ परिवार एक दूसरे के भीतर ही उसको कंट्रोल करते इस फिल्म इंडस्ट्री को, एंड दे ऑल मैरिड विद इन दैट फैमिली एंड एवरीथिंग. वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वो फिल्म्स कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं, मार्केटिंग कंट्रोल करते हैं. नाउ इफ यू आर अ बेटर एक्टर, अ बेटर फकिंग एक्टर हु इज मोर टैलेंटेड एंड अ डायरेक्टर वांट्स टू वर्क टू यू, दैट फैमिली विल नॉट अलाउ यू टू कम अप. Got it. एंड देन दैट फैमिली इज अ सुपरस्टार फैमिली. व्हाई? इसके खिलाफ भारत को चेंज करना होगा. दिस प्रिविलेज हैज टू गो. We have to create our own Elon Musks. We have to create our own Bill Gates. I don't like Elon Musk and Bill Gates. I'm just telling you that we have to create our own self-made people. It can't be rich kids of pampered kids of fathers. It has to be people who are achievers, who are alphas in their field. उनको आप ठीक है. All this makes like sense. I always make sense. That's why BJP and Congress vote like me. मैं बता रहा हूँ देश. वो सही है. This country needs ये चीज़ agree voting for you. But ये बताओ मुझे कि कहीं ना कहीं रेफरेंस तो आएगा ही आएगा. अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल फैमिलीज़ की भी, अगर कोई वकील हैं, उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है, ही हैज़ अ क्लाइंटेल, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने सीखा है, ही विल पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एंड अगर वो काबिल है तो क्लाइंट्स के पास आएगा ना. ऐसे ही अगर मूवीज़ की बात करते हैं, ही गॉट द लॉन्च, बट द पीपल कैन डिसाइड कि ये हिट होगी नहीं होगी. ऐसे ही स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आप चाहे गावस्कर जी के बेटे हो या किसी के बेटे हो, आपको ब्रेक मिला, लेकिन अल्टीमेटली इफ़ यू हैड इट इन यू, यू स्टेड बैक, इल्स यू गो बैक. नो, स्पोर्ट्स इज मोर डेमोक्रेटिक इन दैट. बट फिल्म्स में क्या होता है मैं बताता हूँ. द वे द फिल्म इंडस्ट्री इज नाउ बीइंग स्ट्रक्चर्ड, देयर इज अ डिफरेंस. जैसे मैंने आपको एक फिल्म इंडस्ट्री की बात की, वन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज इन इंडिया, वो पूरा एक फैमिली कंट्रोल करता है. Correct. तो आप कहोगे उसको चांस ही नहीं मिलेगा, बट सिर्फ वो फैमिली अगर डिसाइड कर रही कौन सी मूवीज रिलीज हो रही, दे कंट्रोल द थिएटर्स. That's wrong. That's wrong. Please ask me why are some of these kids in films, and you'll wonder they can't act to save themselves. But eventually they fail.
But does an ordinary person get the same chances? Who's more talented? Then now the question of yours. Now I'll tell you why the question of yours is unfair in the example that you gave of a court. Let's say I'm a lawyer and मैं एक वकील हूँ और मैं बहुत बड़े वकील का बेटा नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ. अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ विनिंग केसेस अच्छा होगा, अल्टीमेटली आई विल बिकम अ बिग लॉयर बिकॉज अल्टीमेटली आई विल इंक्रीज माई फीस. तो डेमोक्रेटिक है. और जो जैसे आपने बताया वो बड़े बाप का जो वकील बेटा है वो केस नहीं जीत पाएगा जब तक उनके डैडी है, जब तक ये, तब तक वो होगा. अल्टीमेटली पीपल गो डाउन बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंट्स. सो देयर इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन दैट. बट दैट सिस्टम इज नॉट मैनिपुलेटेड बाय द कोर्ट्स. कि जज सामने वाला जो फर्स्ट टाइम लॉयर उसको सुनेगा ही नहीं. ठीक है, तो मैं जज हूँ, ये बड़े बाप का बेटा है वकील और ये एक फर्स्ट टाइम लॉयर है. जज दोनों को सुनेगा. बिल्कुल, ठीक है. चाहिए. फिल्म इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में आपको मौका ही नहीं मिल रहा आपकी फिल्म बनाना कि आप शाइन करो, या आपको मौका ही नहीं मिल रहा आप उस सीट के लिए लड़ो. देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस. अगर आप डॉक्टर हो, आपका एक अस्पताल है और आपने वो प्रैक्टिस आपके बेटे को दिया और वो अस्पताल वो बेटा चला रहा है, वो एक चीज़ है. पर एक दूसरा डॉक्टर है जिसके पास अस्पताल नहीं, फर्स्ट टाइम डॉक्टर है, वो इलाज करेगा. जो लोग रोगी हो गए जिनको ये ट्रीट नहीं कर पाएगा वो ट्रीट करेगा. अल्टीमेटली ही विल मेक इट. बट द डेमोक्रेसी गिव्स हिम अ फेयर चांस टू बी अ डॉक्टर. उसकी प्रैक्टिस कोई बंद नहीं करवा सकता. यहाँ पर अनडेमोक्रेटिकली आपको टिकट ही नहीं मिलेगा या आपकी फिल्म ही रिलीज़ नहीं होगी. आपको मौका ही नहीं मिलेगा. तो आप कह रहे हो कि ठीक है XYZ स्टार है, उसकी फिल्म ही नहीं चली, अल्टीमेटली उसको काम नहीं मिलेगा. बट वो फिल्म एक ऐसे लड़की को मिल सकता था जो कर सकता था लड़की, वो नहीं हो रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. द सिस्टम इज अगेंस्ट समबडी. जो लॉ का सिस्टम है वो बंद नहीं है बाहर वालों के लिए. जो मेडिकल सिस्टम है वो बंद नहीं है. येस, इट मे फेवर समबडी एल्स बिकॉज ऑफ वेयर दे आर बोर्न. इन दिस सिस्टम इट्स क्लोज्ड फॉर आउटसाइडर्स. वो सिस्टम खुला ही नहीं है. चाहे कुछ भी हो जाए, आंध्र प्रदेश का कोई भी नेता चंद्रबाबू नायडू जी के बाद उस पार्टी का नेता नहीं बन सकता. वो उनका बेटा ही बनेगा. चाहे कुछ भी हो जाए, KCR के बाद KTR जी ही बनेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. और नेक्स्ट करते हैं. दिस वेंट डीप. ठीक है ना? हाँ, मेक सेंस. यू आर वोटिंग फॉर मी. हाँ, बताओ. I have converted Divas. He's voting for me. So please, all the subscribers, vote for me. चलो, डन. First generation. हमारा लीडर कैसा हो, तहसीन जैसा हो. एक और आता पॉइंट. फुल लॉजिक बात करता हूँ. इसमें ना आंटी कहती हैं कि बेटा, अरे आंटी आ गई. आंटी इज बैक. आंटी कहती है कि बेटा कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिम्स को जोड़ के और हिंदुओं को तोड़ के. अच्छा. तो ये पार्टी पाकिस्तान और चाइना की चमचाई. आंटी की एज क्या थी? हाँ, अब लाइक 60+. ये सब 60 वाले हैं. 60+ ईयर्स आंटी रही इंडिया में. हिंदू आंटी होगी. हाँ, ऑब्वियसली बात है. क्योंकि ये बात आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. आज कांग्रेस से प्रॉब्लम हो गया. अरे सी एक चीज़ बताओ ना, ऐसा है नहीं है. जोक्स अपार्ट, हिंदुइज्म इज सच अ ग्रेट वे ऑफ लाइफ. मुगल उसको नहीं तोड़ पाए, अंग्रेज उसको नहीं तोड़ पाए. आप देखो अंग्रेज जहाँ पर भी गए बहुत सारे देश को कन्वर्ट हो गए. इंडिया में नहीं हुआ. Because by nature Hinduism is so democratic by nature. If you actually look at, मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाऊँगा. If you actually look at, और हम बहुत बार कहते हैं कि democracy comes through the Greece system or the Roman system, etc. Particularly they got in democracy within us, and then we got it through the British system, right? However, if you actually look at India, and let's look at Lord Ram as a king, राजा राम. I'm not talking about Lord Ram. मैं राजा राम की बात कर रहा हूँ. तो राजा राम क्या थे? Article 21 right to life, Article 14 right to equality, Article 19 right to free speech comes from राजा राम. मतलब राजा राम को उनके दरबार में कोई खड़े होकर कह सकता है, सवाल पूछ सकता है, राइट? खड़े होकर पूछ सकते हैं, why is माँ सीता coming not coming? That is free speech. You can agree, disagree is a separate issue. But they asked Ram. He was asked by his courtiers. He had to respond to what his audience wanted, what his voters wanted, what his people wanted, what his praja wanted. Right to equality. There is a story that, beautiful oral story, which Devda Patnaik told, and it's a beautiful story. When Lord Ram returns to Ayodhya after 14 years, वो कहते हैं सब नरो नारी अंदर आइए, because they've all come out to receive him. All the third generation is left out. 2-3 दिन के बाद लॉर्ड राम को पता चलता है, राजा राम को, तो बहुत उनको बुरा लगता है. वो बाहर जाते हैं, उनको वापस अंदर लाने बोलते हैं, आप क्यों नहीं आए अंदर? तो क्या आपने सिर्फ नरो नारी कहा? Where does Article 14 right to equality come from?
मतलब आप सोचो, आप कल्पना करो, आप, अब मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि आप मोदी जी से ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते, आप राहुल जी से नहीं पूछ सकते, राम जी से पूछ सकते थे। वो डेमोक्रेसी है ना, दैट इज डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। कि a courtier can stand up and ask Lord Ram, I don't agree with this decision of yours. Now, we can agree, disagree is a different matter. I am talking only about the fact that a courtier got up and told Lord Ram, मैं आपसे इस बात से agree नहीं करता. What was Ram Rajya? So then, the value of life that comes from Article 21 comes from Ram Rajya. If you actually look at India's culture, why do we revere or look at Ram Rajya as the way? Because it inherently gave us a sense of constitutional morality and democracy. मतलब जब आप राजा से सवाल पूछ सकते हैं, या आपके, मैं नोएडा की बात करता हूँ, आपके एक विधायक से, विधायक तो बहुत बड़ी बात है, कॉर्पोरेटर को पूछो उसको अकड़ होगी, ये तो राजा राम से पूछ रहे सवाल, और वो मुस्कुराते जवाब देते, आंसर करते, ही इज अकाउंटेबल टू हिज पीपल. राजा दशरथ इज अकाउंटेबल. यू कैन अग्री डिसएग्री. अगर हम उनको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन है राजा राम, कौन है दशरथ? आई थिंक नहीं बिल्कुल पूछ सकते. आई थिंक द ओनली राम राज्य इज कम्स थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू दैट बुक ऑफ आवर्स. आई थिंक दैट्स राम राज्य. और जो भी उस थ्रोन पे बैठेगा, प्रधानमंत्री जी के पद पे, वो राम राज्य लाना उसका कर्तव्य है. ये तो गांधी जी कहते थे. ऐसा होना चाहिए आइडियली, लेकिन जो भी हम देखें, दो पार्टीज, बीजेपी की पार्टी इज फोकसिंग मेजरली ऑन द हिंदू वोट्स, कांग्रेस पार्टी फोकसिंग ऑन द मुस्लिम वोट्स. ये वोट बैंक का जो रहता है, इट इवेंचुअली ब्रेक्स द कंट्री. ट्रू. एंड देयरफॉर अब हमें सोचना होगा एज इंडियंस, नॉट एज हिंदूज और मुस्लिम्स, ब्राह्मण्स और दलित्स. वी शुड थिंक एज इंडियंस. वी शुड बी वेरी प्राउड. हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू है, ब्राह्मण है, दलित है, जो भी, अपने कल्चरल रूट को तोड़ना नहीं है, बट वो कल्चरल रूट को पॉजिटिवली अफर्म करना है, नॉट नेगेटिवली. और पॉजिटिव अफर्मेशन करते लोगों के साथ आगे चलते देश को आगे बढ़ाना है. अब अगले 20, 30, 40 सालों के लिए हमारा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हाउ कैन इंडिया बिकम द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. I don't like this idea of India being a superpower. India must be a super partner, must be a super giver, and you'll automatically be a superpower. We always have been. Yes, and we must enhance it. Be a super partner, a super giver, a super friend, and therefore we are a superpower. And our superpower must be that we eliminate poverty. Our superpower must be that we invent technology. Our superpower must be we take our people and other people ahead. Our superpower must be that we work with everybody across the world, except Pakistan. No, I dislike Pakistan. Pakistan is not in. Pakistan को ignore करना है. So ऐसा क्यों है कि आज की डेट में सेक्युलरिज्म गाली बन गया है as a word? If anyone says that, you know, I'm secular, a lot of like backlash is there. मोदी जी खुद कहते हैं मैं सेक्युलर हूँ. मोदी जी जिस संविधान पे शपथ लेते हैं उस पर सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है. सो इट्स गुड टू बी सेक्युलर, बिकॉज आप सेक्युलर, देखो एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, व्हाट इज़ बीइंग सेक्युलर. हमेशा इसको इस नैरो कॉन्टेक्स्ट से देखा जाता है, हिंदू मुसलमान. बट सेक्युलर क्या है? व्हाट इज़ बीइंग इक्वल टू ऑल. आप एक हिंदू हो सकते हो जो महाराष्ट्र में गए और आपको मराठी बोलनी नहीं आती, और वहाँ पे आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और आपके साथ मारपीट हुई, वो भी गलत है. तो उसमें भी माइनॉरिटी हो, भले आप हिंदू हो पर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है यू आर गे और आपके साथ मारपीट हो बिकॉज यू हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, डिपेंडिंग, आप सेक्सुअल माइनॉरिटी हो. किसी को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी हो, धर्म, लैंग्वेज, जेंडर, एनीथिंग. दैट इज सेक्युलरिज्म. ये जो महाराष्ट्र में नाटक कर रहे थे ठाकरे भाई, वो गलत था. गरीब को पीटना, गरीब को मारना, दैट्स रॉन्ग. सो वी हैव टू स्टैंड अप. एंड इफ आई एम स्टैंडिंग अप कि किसी व्यक्ति को नहीं पीटना चाहिए क्योंकि उसको मराठी बोलना नहीं आता है, आई विल स्टैंड अप किसी व्यक्ति को नहीं पीटना चाहिए चाहे उसका धर्म कोई भी हो. यू कैन डेफिनेटली हैव आर्ग्यूमेंट्स ऑन एनी एंड एवरी टॉपिक ऑन हाउ टू रिफॉर्म, एंड दैट शुड बी देयर इन डेमोक्रेसी. हर चीज़ में रिफॉर्म होनी चाहिए. हिंदुइज्म में रिफॉर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुआ है. हिंदुइज्म में सच एन ओपन वे ऑफ लाइफ. तो हमें डिबेट करना चाहिए हर चीज़ के अंदर कि और रिफॉर्म कैसे करें, बट मारना पीटने का अधिकार किसी को नहीं है, मॉब बनकर. और अब जानते हो, क्योंकि मैं मॉब वायलेंस के खिलाफ लड़ता हूँ, सबसे अधिक मॉब वायलेंस किसके खिलाफ होती है?
ट्रांसजेंडर्स, थर्ड जेंडर, महिलाओं के खिलाफ आपने किसी महिला को कह दिया कि चुड़ैल है, किसी बुजुर्ग बुढ़ी महिला को 10 लोग मिले, पीट लिए, मार दिया, जला दिया, इसकी प्रॉपर्टी हड़प कर दी, ये अलाउड होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? वो भी दैट इज ऑल्सो शी वॉज ऑन माइनॉरिटी। एक बुढ़ी औरत गांव में रुकी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी है, 10 बच्चे ने 10 यंगस्टर्स एक हो गए, कहा दे ये तो चुड़ैल है, इसको जला दिया, मार दिया, फेंक दिया, पागल कर दिया, फेंक दिया बाहर। वो भी तो माइनॉरिटी थी। माइनॉरिटी की डेफिनेशन समझो, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान से बाहर आओ। देश को अब आगे जाना, अब हम एआई के ज़माने में हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स के ज़माने में, हमें अपने बच्चों, और ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट हो जाएगी। हमें एक ऐसे भारत को बनाना है, क्योंकि हमें अपने आप को इक्विप करना है मॉडर्न जॉब्स के लिए, थर्ड जनरेशन वेब टेक्नोलॉजी के लिए। वी हैव टू इक्विप आवरसेल्फ फॉर दैट। There is nothing, because our kids are the same age, एक महीने का फ़र्क है, there is nothing you can teach your son or I can teach my son that will be relevant 20 years from now. Nothing except values. Yeah. Nothing. You fucking teach your child anything, it's not going to be relevant 20 years from now. बाल काटना उसको सिखाओ, example, skill. You already have machines in South Korea that are cutting machines. You teach him to cook, you already have machines that are cooking. I was in Singapore in May. Perfect fried eggs. The way you want it, half done, well done. Sunny side up, down. Machines are doing it. You don't need a cook. Perfect scrambled eggs. Rotis in Malaysia, rotis, Indian rotis, being made by the machine. I think there's one such machine in the Golden Temple. I'm not sure. I'm told, but machines. What skill are you tailoring? You have suits that are coming bespoke from machines. Dry cleaning, that's done. What are you going to teach your son that's relevant 20 years from now? These are only going to get better. Cleaning. You already have automatic vacuum cleaners. Driving, you have automatic cars. The only thing we can teach our kids is how to adapt to this technology, how to distinguish the real from the fake and not be misled, and how to be better human beings. Nothing else that you teach your kid will matter 20 years down the line. He doesn't need to learn what is the capital of Bangladesh, what is the capital of Pakistan, what is the capital of USA, because the minute he thinks it, it'll be in his watch. That's how technology will be integrated. The minute he thinks USA capital Washington DC will flash. And technology is you already have those specs, Yeah. right? They're only going to get better. So it'll flash in his eyes. The minute he thinks, we have to equip our kids for this. Not Hindu, Muslim, not Brahmin, Dalit, but without them forgetting the identity. Do you feel that काफ़ी लोगों की दुकान ऐसी चलती है? सबकी बंद करेंगे और देश को आगे सी अब समय आ गया है कि अगले 20-30 साल हम अपने आप को देश के लिए डेडिकेट करें, जो हमारा जनरेशन है। हमें देश ने बहुत कुछ दिया एंड वी हैव गॉन अहेड, बट नाउ वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग। अब समय आ गया कि देश, बिकॉज इंडिया, इफ इंडिया प्रॉस्पर्स द वर्ल्ड विल प्रॉस्पर। यार 140-150 करोड़ की आबादी है और 160 करोड़ तक जाएगी, तो अब देश को और दुनिया को आगे ले जाने का जो दायित्व है हमारी जनरेशन पे है। आई हैव अ डाउट, थोड़ा सा बताना मुझे। एक लाइन है कि देश हित सर्वोपरि है। आई बिलीव दैट। यू बिलीव इन दैट? नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट कंप्लीटली। यहाँ पे पीपल इन इंडिया हु आर मिडिल क्लास, दे हैव दिस थॉट। वो कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम एक इनकम अर्न करते हैं, उसका टैक्स जो हम लोग पे करते हैं उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता, वो जाता है माइनॉरिटीज़ को या फिर उन लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत है। तो देश हित के नज़रिए से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो वो लोगों को लाइक सब्सिडी या जो भी चीज़ उनको मिल रही है, लेकिन जो इंसान टैक्स पे कर रहा है उसे कुछ नहीं मिल रहा है। आई फर्मली बिलीव कि क्या करे वो? हाँ, मैं छोड़ दे। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वर्तमान सरकार का जो डाउनफॉल होगा वो निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री होगी। आई एम सेइंग दिस वेरी सीरियसली। और ऑनेस्टली मैंने बहुत बार ट्वीट किए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड टू दिस ऑन इंडिपेंडेंस डे स्पीच कि उन्होंने कहा टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे। अनफॉर्चुनेट जो टैक्स रिफॉर्म्स वो करना चाहते हो, अभी एक बिल उन्होंने पास किया, उसमें आपके ईमेल्स में स्नूप करेगा, आपके सोशल मीडिया पे, सो कोई रिफॉर्म हुआ नहीं। जो निर्मला जी ने अनाउंस किया कि 12 लाख तक को इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, आप उसके कंडीशन देख लो, आप इट्स सिली। जीएसटी रिफॉर्म्स में कहा हम जीएसटी को सिंपल करेंगे, 40% डाल दिया। तो पीएम जो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स उसको स्क्रू अप करते हैं, एंड आई एम अगेन सेइंग द ब्यूरोक्रेट्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री विल बी द डाउनफॉल ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, टेक इट फ्रॉम मी, एंड निर्मला सीतारमण जी's मिनिस्ट्री बी द डाउनफॉल। हाउएवर, व्हाट शुड हैपन, लेट मी टेल यू दैट वी कैनॉट नॉट बी अ वेलफेयर स्टेट। हम आज़ाद हुए ही वेलफेयरिज्म के लिए,
पंडित नेहरू कहते अपने पहली स्पीच पे, हर आंख से आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य है, और ये हमारा कर्तव्य है। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी गरीब माँ को बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को वो न्यूट्रिशन नहीं मिले जो आपके और मेरे बेटे को मिले। दैट इज़ नॉट वाई वी आर इंडिपेंडेंट, इट इज़ आवर ड्यूटी टू फकिंग डू इट। ये नहीं हो सकता कि कोई बुजुर्ग आदमी को वो हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़ ना मिले जो आपके और मेरे पिताजी और माता जी को मिलते हैं हमें। ये हमारा कर्तव्य है और दायित्व है। लेकिन वेलफेयरिज्म का मतलब ये नहीं होता आप लोगों को स्कूटी दे दो, इसका मतलब ये नहीं होता आप लोगों को सोने की चेन दे दो, इसमें अंतर है। ठीक है, अगर आपको बस में महिलाओं को देना है ताकि वो काम तक जा सकते, ताकि women participation, इट इज गुड, पर उन महिलाओं को तो who can't afford it, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। बट एट द सेम टाइम जो मिडिल क्लास पैसा कमाता है, आज अगर आपको इस मुल्क में 100 रुपया खर्च करना है, आपको 148 मिनिमम कमाना है, 18 रुपया जीएसटी का, 30 रुपया आपके इनकम टैक्स का, और वो 48 मुझे और आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट वो 48 रुपीज़ देने के बाद, पेट्रोल फ्यूल टैक्स देने के बाद, रोड टैक्स देने के बाद, हमें सिर्फ पॉट होल्स मिलता है। मैं आपके घर के बाहर आया पॉट होल्स, अगर मैं आपके घर के बाहर, मैं अगर गॉड फॉरबिड आई फॉल डाउन, मैं सरकारी अस्पताल में नहीं जा पाऊंगा। शायद आपको कॉल करना पड़ेगा कि अस्पताल में कॉल करते, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देने के बाद मुझे फेवर लेना होगा। That is not the life I deserve. I am fucking paying 148 rupees. You treat me like a partner in this country, not like you're my baibab. I had a startup business of quantum computer cooling systems. Achha. The guys had to move to Dubai because bureaucrats were creating problems. What I'm saying is, when a person pays taxes, treat him like a partner of this country. एक आदमी, अच्छा मैं एक सिंपल चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर भारत को 8-9% ग्रो करना है जिससे हम गरीबी हटा सकते हैं, वो ग्रोथ कहाँ से आएगी? सर्विस इंडस्ट्री से। आपको लेबर इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर में लैंडलेस लेबर, उनको बाहर निकालना है। अगर आप उनको बाहर निकालते हो, वो कहाँ जाएंगे? वो नोएडा आएंगे, गुरुग्राम जाएंगे, दिल्ली आएंगे, मुंबई आएंगे, पुणे आएंगे, बैंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, कोलकाता जाएंगे। वहाँ जाकर वो क्या करेंगे? वो स्पास खोलेंगे, जिम खोलेंगे, ट्रेनर्स बनेंगे, फोटोग्राफर्स बनेंगे, कैमरामैन बनेंगे, वीडियोग्राफर्स बनेंगे। दे विल गेट इनटू द सर्विस इंडस्ट्री। अब उसमें सरकारी दखल क्यों है? मेक बिजनेस ईजी। बिजनेस करो, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, सिंपल आपकी लाइबिलिटीज खत्म करो, गेट आउट ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट इज नाउ पास्ड अ लॉ where the income tax can get into your email. Why the fuck does the income tax have to go into your email? अच्छा, ईमेल में जाके they'll check all your personal emails, क्योंकि आने तो वही बाबू है। वो आपके फ़ोन चेक करेंगे, फिर आपके सारे फोटोज चेक करेंगे, विच चिक इज यूर सेंडिंग पिक्चर्स टू, विच चिक इज सेंडिंग पिक्चर, व्हाट यू व्हाट्सएपिंग, एंड दे आर लकी दैट दे डोंट टेल योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, और दे डोंट टेल योर हर वाज। Why do you need this? Why can't these when you pass these sweeping draconian laws, why can't there be rules and regulations of how this is to be done? Why are you giving sweeping powers? So how do you expect to be a third generation technology superpower with these kind of mindset? Even today in India, is crypto legal or illegal? Tax तो लेते हैं निर्मला जी, but crypto legal illegal नहीं है, because the government can fuck you the way you want based on the laws which are ambiguous. Why will a middle class person stay in this country? Why will a high network individual who's first generation stay? And that's why everybody above 50 to 80 crores is getting a house in Dubai. You go to I've said this multiple times, come with me right now, you and your lovely wife, come with me to Dubai. If you don't find 100 people from Delhi, 100 people from Mumbai, if you don't find them, the top people why do they have houses in Dubai? Why? यहाँ पर we have to make doing business easy without babu hassle. Please tell me, I'm just simple issue. Gadkari ji wants you to put 20% ethanol in your petrol. Your fucking cars can't take that engine. Your engines are conking off. The mileage is going down. But they are forcing it because all sugar factories want it. Because sugar consumption is obviously going down, etc., etc., etc. Okay? You don't have the engines to do it. You're paying full rate for petrol. India exports petrol to Bhutan. Bhutan charges cheaper. We mix 20% ethanol and our petrol is more expensive. Then you pay a road tax. Then you pay a GST on cars. And you still have a broken back. Why? And you pay a toll tax. Why? What sort of nonsense is this? True. Why can't it be simple? And then look at the GST. Car is 18%, tires are 28%. Like, bro, give me a car without tires. Is it possible? अब बात हो जाती है ना कि जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पैसा कहीं और जा रहा है टू अपलिफ्ट दोज हु नीड इट। So what is the definition of upliftment? It should be education. It should be healthcare. It should be good quality houses. जो कर तो रहे हैं, ऐसा लगता ही है आपको कि जो भी है, चाहे गांव में सड़कें पहुंचना है या फिर एजुकेशन है या फिर ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग। शायद देश इतना बड़ा है,
इतनी बड़ी लाइक जनसंख्या है, इतनी गरीबी है कि उसको उठाने में ही जो मिडिल क्लास है वो पिस जाता है। तो फिर आप लोगों को स्कूटीज क्यों दे रहे हो? हाँ, वो तो गलत बात है। फिर आप लोगों को गोल्ड चेन्स क्यों दे रहे हो? फिर आप लाड़की बहना में 2,000 2,500 क्यों दे रहे हो? वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली महाराष्ट्र चुनाव के पहले। वो तो आपके मेरे टैक्स पेयर है ना। और मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, विच इज़ अ सपोज टू बी अ कैपिटलिस्ट पार्टी। देयर इज नो पार्टी मोर सोशलिस्ट इन द बीजेपी। मनमोहन सिंह जी वो ज़्यादा कैपिटलिस्ट थे। सो दिस इज़ रॉन्ग। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक सड़क बनाओगे, इट इज़ कैपेक्स, उस पर आपको बेनिफिट होगा, गाड़ी चलेगी, पेट्रोल कंज्यूम होगा, देयर इज एन इकॉनमी। आई एम फुल फॉर दैट, नॉट फॉर गिविंग पीपल स्कूटीज एंड लड़की बहना स्कीम। आई एम अगेंस्ट इट। और चाहे इसका जो भी पॉलिटिकल बैकलैश हो, आई डोंट केयर, आई एम क्लियर ऑन दिस। वी हैव अब देखो सरकार, ओ कैब फेयर्स आर वेरी हाई, गवर्नमेंट विल रन इट्स ओन कैब सर्विस। इज गवर्नमेंट सपोज टू रन कैब? दे वांट टू स्टार्ट नाउ, government wants to start their own catering in airports as well. So bro, I am an entrepreneur, I go to a private airport, I pay premium price and I get a store to sell food products. Now because somebody complains that my water is priced slightly higher, or my Diet Coke or my Coke is higher, or my burger is higher, now the government wants to come there and compete with me, a middle businessman, and the government has monopoly of space, has monopoly of money, has monopoly of manpower. How the fuck do I compete against the government? And has monopoly of resources. Now, should the government be making shops now? Now, let's come to the next thing. The government has a monopoly on practically everything, including printing money. It has the only monopoly on printing money, right? So there is no way I can ever compete with the government. By way of taxes, the government is taking almost 30 to 40% from a business. So let's say I start a 5-star hotel, 28% on rooms, and the owner of the 5-star hotel would be easily in a 38% tax category. I'm saying 30% round figure. So he's paying almost 50% to the government, more or less. So the government is a 50% partner in his business in a 5-star hotel. But the minute somebody is doing lines, by lines we mean cocaine, who's got nothing to do with the owner is fucked. He's fucked for no reason. You shouldn't do cocaine. Nobody will ask the government why the fuck did the cocaine come in the first place from Afghanistan. That owner will be screwed. Where is it easy for entrepreneurs? Then your electricity bill for 5-star hotels will be higher. Then there will be a tax on that. There will be an education cess on that, which I have no problem with. But after paying so much, giving the government more, the risks are mine. I have taken the loan, spent 100 crores, built a hotel. Where is my freedom of doing business? And after doing all of that, I still have to entertain from low-size babus to mid-size to high-size babu. A local inspector of mine can come in my hotel and eat for free. बिल दे सकता हूँ मैं इसको? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। वो तो आपका दरोगा आएगा, आपके 5-स्टार होटल में साहब आ रहा है, कांस्टेबल आएगा, लगा देना, टेबल रख देना, साहब की एनिवर्सरी है, दे सकता हूँ मैं दरोगा साहब को मेरे एरिया के बिल? हैप्पी एनिवर्सरी बोल देना, दे सकता हूँ मैं। और जीएम को बोलेगा उनको रिसीव करो। I'm not even talking about an SP, ACP, DCP. I'm talking about local inspector. Can you do it? Your excise walas will come. Your GST walas will come. But do you feel that ये सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, ये हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं। This is an India problem. जिसके पास एक पावर है, वो ऐसे ही यूज करता जा रहा है। This is an India problem. That's why 50% bureaucracy I will cut. First rule. This is the problem in India. Angrez, there's a joke which Abhijit Iyer Mitra says, and it's brilliant. It's mind-blowing. He was here. Yeah, and it's mind-blowing. You know what he says? He says, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो both countries were fucked. पाकिस्तान को मिलिट्री मिली और इंडिया को ब्यूरोक्रेसी मिली. And he's true. He's so fucking right on that. They got fucked because they got the military, and we got the bureaucracy. And just look, there's now this GST. GST people are now going. This government's made GST criminal. In which country will a tax like GST be criminal? It's a civil offense. यार आपने टैक्स भरा नहीं भरा उसका डिस्प्यूट, उसको आपने क्रिमिनलाइज कर दिया. हाँ, GST में अगर मैंने चीटिंग की, दूसरों को कौन किया, that is criminalization. Not paying GST be criminal. This is not how. आप बिजनेसमैन को ईडी उठाकर जेल में डाल देती है. यार, if I'm an entrepreneur, I'm creating jobs, no? Yeah. See, you run a podcast. I'm being honest. वो रणवीर के साथ जो हुआ, Beer Biceps. I don't like Kunal Kamra's comedy. I don't like it. He's a friend of mine. I don't like his comedy. I'm very clear. But यार, आपने जाकर रेस्टोरेंट को तोड़ दिया. What the fuck, bro? Like, there were normal people working there. He didn't even own it.
And you don't like the joke, don't fucking watch it. True. I didn't watch it. You don't like Ranveer's shows, don't watch it. बिल्कुल. You have no right to threaten people, break down people, end entrepreneurs. घर जाके Ranveer must have hired 3-4 people in his podcast. Yeah. आपके वहाँ भी हैं लोग, you've hired. You are creating employment. Yeah. Out of these 2 or 3 people you've hired, somebody has a loan, somebody must be taking care of a family member. बिल्कुल. It's your responsibility to take care. Somebody comes here, breaks your studio. What the fuck? Puts you off. Some babu comes and says, I don't like this thing. You are now summoned to Assam, to West Bengal, because you said this in your podcast. You have a wife, kid, you have to leave them and go there. Some small person is upset with you. That's not the way it works. We have to go beyond this now. We have to be a country. The government should say, Divas, congratulations, you're a small entrepreneur. You've done something that is incredible for this India. You're hiring 3 people, you've bought this, you've paid taxes. This camera you've got, you've paid GST on this. Yeah. This system, lights, you've paid GST on this. You've created an environment of doing entrepreneurship in India. You've contributed to this country. Instead of treating you like a hero, you're treated like shit. That is what I'm against. People think I'm too right-wing. मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस वाले कंफ्यूज है. अब पूरे कांग्रेस वाले कंफ्यूज है. संघी हो गया है. और संघी बोल रही है, तो भाई हमारी टीम में, लेकिन गाली तो बीजेपी को देता है टीवी पे. आई एम टेलिंग यू. गूगली. आपने कहा था कि like tax is equals to being a partner, right? Yeah, Don't be you are partner. partners. But मेरा point है इसमें कि अगेन बैक टू द सेम थिंग, जिसने इतना टैक्स पे करा उसको इतना मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता ना. जो टैक्स नहीं पे करता है उसको ज़्यादा मिलता है आजकल. दैट इज द पॉइंट अबाउट द वेलफेयर एंड द कैपिटलिस्ट माइंडसेट, Which must end. I am saying. फिर कैसे काम करेगा? अभी आप कह रहे हो कि देश से सर्वोपरि है, सबको मिलना चाहिए. बिल्कुल. तो उन्हें कैसे मिलेगा? अरे जब तक तो हम नहीं भाई देंगे. सेंसिबली तो दो. अब मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो दे क्या रहे? कार्बोहाइड्रेट्स. एटलीस्ट प्रोटीन तो दो. एटलीस्ट प्रोटीन तो दो ब्रो. ठीक हो यार, वो ग्रोथ हो. अब दे रहे ठुसा रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, which is actually bad for your health. Nobody in our country should be hungry, period. We have no right to be this 4th largest economy in the world and hungry people. But at least give them nutrition. Don't give them carbs. So bring in a rapid fire now. Done. ठीक है. मोदी जी in one word. Assertive. राहुल गांधी. Can I say one more word? Grounded. And I'll explain this why, though it's a rapid fire. When I heard the Prime Minister's Independence Day speech right now, his 103-minute speech, which is the longest in his tenure, he addressed, forget the political part of it, he addressed issues that concerned India. Now, whether he works on it or no is separate. The man is grounded. The man has his ears to the ground. He takes feedback. I have such respect for him that he does that. Phenomenal. Interesting. राहुल, अभी लोग हैं कंफ्यूज्ड कि ये बीजेपी के साइड है या कांग्रेस के साइड No, है. I like that about him. ओके. जो राहुल गांधी जी हैं, ओके, राहुल गांधी इन लाइक वन वर्ड. Very, 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 very hardworking, dedicated, and sticks to a cause. Priyanka Gandhi versus Smriti Irani, who's a better communicator? Priyanka Gandhi Vadra, by far, by distance of, if it's a 400-meter race, by distance of 300 meters. Okay. She doesn't shout, she doesn't scream. She makes a point calmly. She speaks in English and Hindi, which is bilingual, which is even Mrs. Irani is. But she speaks with a calm and clarity that very few have. I would go to the extent of saying that Priyanka ji in Parliament, in Lok Sabha, is amongst the best orators in such a short time. She's the best Congress orator for sure. In Parliament, I'm talking. And apart from that, in Parliament overall, I think she's the best orator along with Amit Shah ji. The 2 very good orators in Parliament who speak very well. Okay. Arvind Kejriwal versus Mamata Banerjee, who's a better leader? Mamata Banerjee, ma'am. Okay. By far. Look at Mamata Banerjee. Look at the state she wins. One BJP leader you secretly admire. Modi ji. Not secretly, I openly. I do Apart admire. from Modi ji. I like how Amit Shah ji has evolved as a parliamentarian. I really admire that. The way he speaks in Parliament, I do admire that about him. I don't admire him as a Home Minister, as a politician, and as a parliamentarian, not as a Home Minister. As a Home Minister, I think he's failed. Just to be clear that I'm Congress side. Otherwise, you guys will troll me. We will extract this clip, cut that part from here. Don't do that. Don't do that. इसको clear करो. अच्छा बताओ कि एक कांग्रेस लीडर who should retire.
Manishankar Iyer. I can give you 100. अच्छा. But starting with Manishankar Iyer for sure. So let him live the rest of और his life. एक कांग्रेस लीडर जिसके बिना पार्टी खत्म है. I don't think party can get over without anybody, but I think one Congress leader who should come more in front is Sachin Pilot. I really think he's the best Congress orator along with Priyanka Gandhi outside of Parliament because he's not a parliamentarian. English, Hindi, bilingual, popular across all communities, across sections, men, women, youngsters. I think brilliant. One thing like Modi ji does better than Rahul Gandhi ji. I don't know what he does better than Rahul Gandhi ji because I don't know. It won't be a fair. No, it won't be a fair comparison because they have different roles. Rahul Gandhi ji has never been chief minister or prime minister. Modi ji has never been just an MP. So that will be an unfair comparison. But as a politician, I think one thing that Modi ji may do differently from Rahul Gandhi ji is some of the feedback that he gets, he acts upon it immediately or at least shows his intent to act upon it. Rahul Gandhi ji, I think sometimes may want to stick to what he believes in is right, which is fine because he absolutely believes that's the right way to go. Okay. Ask me what Rahul Gandhi ji does better, no? Balance it. नहीं वही पूछेंगे हम लोग. ये वाला नहीं पूछेंगे आप मेरे को फंगी बना रहे हो. पूछो यार. ये वाला पूछो. On request, on force, on a gunpoint. I've been asked. What does Rahul Gandhi ji do better? What does Rahul Gandhi ji do better than Modi ji? यार राहुल गांधी जी ना कोई मुद्दा सोच लिया ना उसको छोड़ते नहीं है. वो फिर उसके पीछे जो लग जाते हैं ना लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल. वो लैंड एक्विजिशन बिल था अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड दो किसानों के लिए अभी ये इलेक्शन कमीशन के पीछे. Rahul Gandhi ji is like that typical guy. You don't want to. He's like this good guy till you get into his bad books. Then there's no escaping Rahul Gandhi. Then he'll go after you. So I think that's what he does. He doesn't leave an issue. If you could remove one person from the BJP IT cell from X, वो कौन होंगे? Nobody. कोई तो होंगे जिनसे you don't like No. like tweeting and retweeting and messaging and replying. No, nobody. I really get along with everyone. And I don't care what people say. So one tweet you like regret कि मैंने क्यों किया? I don't regret anything in life. I've never regretted. I think I could have You were worded. trolled, you were like backlash. कुछ Yeah. मिलाओ. I think I could have said things better. कौन but सा वाला? Many things. Not Yes, one. There are many Pick things. one. जहाँ पे felt कि अरे यार क्या सोचा था और क्या उन्होंने perceive किया? I think, I just think that it's important in life to sort of evolve. What they perceive, I don't remember, but there are many. At that point, the thing about internet, it's got such a short shelf life that you don't remember also. So I genuinely don't remember. But there's just things that you say and that's how it is. So who's more difficult to debate with, Sambit Patra or Mr. Trivedi? Sambit doesn't do it anymore. Yeah, Sambit is more fun. But I have so much immense... before coming here, I was with Sudhanshu ji on TV, just before coming here. I have so much respect for Sudhanshu ji. And he's both Sambit and Sudhanshu ji are one of the nicest people I know. They've been part of my married life in terms of the wedding because a lot of BJP leaders came. So, वो घर की बात थी कि यार आप अडवाणी जी आ रहे थे, बाकी सारे आते, आप देख लेना. और उन्होंने बिल्कुल छोटे भाई की तरह किया, लाइक अडवाणी जी को रिसीव करना, और वो सब उन्होंने किया. सो आई जस्ट हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सुधांशु जी. एंड आई टेल यू समथिंग व्हिच इज टुडे आई एम सिटिंग विद अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट at not lunch but and a film producer friend of mine, and we were discussing Sudhanshu ji and just the amount of respect that Sudhanshu ji gets across party lines and the media and everything. I mean, he's a very knowledgeable person. He's so good in astrology, I think, and I'm so blessed to know him. And I love debating with him because I learn so much. Every time I take something home. In fact, I always tell anchors, like this show that I was on 5 p.m. show, the anchor, I kept telling her, yaar, ab Sudhanshu ji, ab bolo BJP ko Sudhanshu ji ko bheje. Yeah. So, because you get to learn so much from him. I love that. So what do you think about C.P. Radhakrishnan ji? Good. I mean, obviously he'll win the election. Obviously, that's true. And that's the numbers that the BJP has. As a person? No, the Congress doesn't have the numbers, not the India Alliance. No, as a person. I don't know him at all. Okay. But from what I've read, he's a man of high integrity.
Nothing against him. Even as governor of Maharashtra, he was very good. Even governor Jharkhand, which was an opposition government, he didn't really do anything that was not to be done by governors. He's such a decent man, and I like those attire, and anyone was better than the last vice president. And I know, again, I'll be called a Sanghi, but this last vice president, I don't understand why Congress, and I'm going to be critical of the Congress, or at least a couple of these Congress people suddenly started having feelings for this vice president. He was so disrespectful to the opposition. He was so... Chairperson Rajya Sabha is a seat with a lot of gravitas, and you're chairperson Rajya Sabha. You must respect the opposition. The way he would talk down to them, and suddenly now this opposition thinks that he was a good guy. He was a terrible vice president and a terrible deputy chief minister. But I have to tell you, audience, the gossip on the vice president. So you know why vice president was removed? Gossip on the vice president? Yeah, I'll tell you why he was removed. इनको लगा उपराष्ट्रपति को कि एक्चुअली नंबर 2 है देश में. मैं सच कह रहा हूँ. So yes, protocol wise he's number 2. President's number 1, he's number 2, Prime Minister's number 3, protocol wise. But actually the country is run by the Prime Minister. The President also cannot go against the Prime Minister. The President has to act on the aid and advice of the Cabinet of Prime Minister. And that system is settled, which is part of the letters between Nehru and Rajendra Prasad, which BJP exploits. And you can't have a situation the President is interfering with the Prime Minister. The Prime Minister, the buck stops at the Prime Minister, period. Now, not only does Bro think that he's number 2 in the country, actually, Bro also wants some of the Maybachs that the Prime Minister and the President have. He also wants the same protocol. He also wanted his pictures put up at airports and other places where the President and the Prime Minister's pictures are put up. So he'd already gone onto a tangent of thinking he's actually number 2, which is very dangerous for democracy. I also been told that in Iran there was a situation where protocol something was there, and he blasted those officials saying that if the Prime Minister was there, I am number 2. There was this one incident where Shivraj Singh Chauhan ji was attending a function with him, who was a cabinet minister, where he blasted Shivraj Singh Chauhan ji in front of everyone, saying, I'm number 2 in the government, come and give me the report. You can't do that. So there were these things that ultimately what happened with the removal of Justice Verma petition, those things are well known and well documented. I won't get into that. But our man was thinking that he's actually number 2. So I think that at some point you have to have your constitutional lines drawn. So, but I hope this vice president and chairperson does a good job. I really do hope that. That Rajya Sabha deserves it. सिंह साहब आप आने वाले बोले पॉलिटिक्स में, सो पॉलिटिक्स में सच बोलना ज़्यादा डेंजरस है या फिर चुप रहना? या चुप रहना? नहीं, you must speak the truth. कौन क्या उखाड़ लेगा? अभी देखिए, I am going to take your podcast to say that I am going to be sitting next week outside the Prime Minister's residence on a fast because of this India-Pakistan bullshit that's going on. Match. Oh, the Asia Cup. Yeah. Fucking nonsense. My Prime Minister told me in Parliament. फास्ट पेट हो गए? हाँ. क्यों? एक दिन का फास्ट that this India should not play. और उसके बाद अगर नहीं फिर भी मैच हुआ, then we'll have to figure out a longer fast. The point is, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसमें, ये बहुत important, it's close to my heart. My Prime Minister, my Home Minister and my Defence Minister in Parliament, via Parliament, told me and the people of India, Operation Sindoor is paused, it's not over. Pakistani men trained by the Pakistani army entered 200 kilometers into my territory. They fucking opened the pants of the people, checked their penises, made them recite the kalma and shot them fucking dead in the head. 26 innocent men, 25 Indians, 1 Nepali. Innocent men were killed on the basis of religion after opening their pants. Filth in Pakistan cheered it, including present-day cricketers and ex-cricketers like Shahid Afridi. Asim Munir made a hate speech that led to Pahalgam. They cheered Asim Munir. Not one fucking Pakistani spoke against Asim Munir. Not one. No Pakistani spoken against him. There is nothing called a liberal Pakistani. A liberal Pakistani is a fucking oxymoron. They're only liberal till the point that it works for them. The second they get an opportunity, they'll screw my country over. Not one said Asim Munir's hate speech was wrong. We smashed them in Operation Sindoor. They had to beg for mercy. What do they do after that? Asim Munir goes to the US and threatens to nuke us. He's not talking about conventional war. He's talking about fucking nuking us, vaporizing us and our families. India doesn't do this. Whether you're a Modi supporter or Rahul Gandhi supporter, whoever's Prime Minister, we don't talk about nuking people. We are responsible. Yeah. He wants to fucking nuke us. Mohsin Naqvi,
the president of the Pakistan Cricket Board, the chairperson of the president of the Asian Cricket Council, Mohsin Naqvi, the president of the Asian Cricket Council, the chairperson of the Pakistan Cricket Board, also is the Home Minister or the Federal Interior Minister of Pakistan. Okay. He goes on and echoes Asim Munir of nuking us. So the person who's the head of this Asian Cricket Council, who will have the Asian Cricket Cup, and is the chairperson of the Pakistan Cricket Board, and is also the equivalent of the Home Minister in Pakistan, the Federal Interior Minister, which is highest in government, the equivalent of Amit Shah ji, is talking of fucking nuking us. And we are going to play cricket with them when Operation Sindoor is paused. Don't give me this bullshit of what happens in the Olympics and all. I completely understand that Olympics, we don't have the wherewithal in the Olympics. I understand that. But we do have in the Asian Cricket Council, and I'll tell you why. The Asian Cricket Council, BCCI, doesn't make money. BCCI donates all its money. This tournament is primarily held, so other Asian cricket boards can make revenue because of India's participation. That's Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. I have no problem with all the other except Pakistan making money on my expense. You can't fucking come 200 kilometers into my country, remove the pants of my people, shoot them dead on. My Prime Minister tells me via Parliament, Operation Sindoor is not over, it's paused. They are mocking it. Their cricketers are mocking it. Not one has spoken out against Asim Munir, not one. Their Home Minister, who's the chairperson of the Pakistan Cricket Board and Asian Cricket Council, is saying we will nuke fucking India and we have to play cricket and give them money? Are you fucking kidding me? Give away those 2 points. If India pulls out of this tournament, the Asian Cricket Council will collapse. I'm practical. I understand we can't do it in the Olympics. I totally get that. I also go a step further and say, grudgingly, we can't do it in ICC multinational tournament, World Cup, etc. The Asian Cricket Council, who gives a fuck about it? Like you're defeating Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Pakistan. Does anyone give a fuck about it? Why are we playing them? I'm sorry, this makes my blood boil. You can't fucking tell me about nationalism and patriotism and go play there when their cricketers, serving cricketers, were putting up stories on Instagram saying this is a new Operation Sindoor, where the Pakistani army putting Sindoor on Indian women's this thing. When Shahid Afridi was removing bike rallies. What the fuck do we play them? And I'm sorry if I'm offending you or I'm offending anybody or I'm offending those woke people who think sports should not mix. If blood and water can't mix, then how the fuck can sports mix? With those people, did one cricketer say this is wrong? They put up a story of Pakistan army putting Sindoor in those women's head. And you want me to play cricket and cheer? I feel like puking. It makes my blood boil. And if the Prime Minister does not act, I will sit on a fast. And I don't care if I'm mocked, if I'm made fun of, if I'm humiliated, if I'm beaten up by the Delhi police. I don't give a fuck. Because when the history of this nation will be written, I will be like that sparrow that carried water in its beak when the forest was burning. Many birds mocked the sparrow that why are you carrying water, you won't put the fire off. And the sparrow said that at least when history will be written, one person tried. And I will stand here and I will try. I will sit there and I will try. Because it is inconceivable that people are being killed by a neighboring country based on religion in the most barbaric way, and then they talk of nuking us. You can't fucking nuke us, bro. It's not fucking right. First, war is not right. Forget war, they're talking about nuking us. Nuking us. I resonate with what you said. And I also feel at times कि इंडिया में जब कभी किसी का रेप होता है तो लोग कैंडल लाइट पे निकलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को. बट आफ्टर कपल ऑफ डेज दे गो बैक बिकॉज काम देखना होता है अपना. आपने ये फास्ट किया एक दिन का, गुड, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है अल्टीमेटली हो क्या रहा है? दैट विल हैपन द वे दे वांट, और वुड समथिंग चेंज बिकॉज ऑफ this attempt? I don't know. Next week I'll do one fast to give a warning. Then we'll fast more. I don't know. I'll figure it out. Yeah, Gandhi didn't think. I'm not comparing myself to Gandhi. Mandela didn't think. Yeah. Shah Rukh Khan, when he moved from Delhi to Mumbai, didn't fucking think
यार you have to do it. You just have to do it. You have to jump in. Something else. I mean, I understand कि fasting, non-violence, and all these measures are. यार मैं पत्थरबाजी तो नहीं करता पीएमओ के बाद वो तो नहीं कर सकते ना यार वो तो और गलत है वो करना भी नहीं चाहिए ये बताओ कि suppose after all of this you get some trolls, right? तो how will you handle it, or how do you handle trolls? उनका राइट है ना यार मुझे ट्रोल करना हाँ तो how do you handle like trolling? ओके उनका राइट है सी आई एम इन पब्लिक लाइफ आई एम इन पब्लिक लाइफ you also called me for this podcast because at some point I'm in public life बिल्कुल so then I chose this nobody forced me बिल्कुल I'm not famous for a living I'm famous because I do a job that the byproduct of it is fame so I can't do away with that fame but with that fame comes other things including trolling or threats or sometimes people are violent and that's fine I have to roam with security that's fine I chose that. Nobody forced me. Divas didn't put a gun on my head and say, bro, you have to be fucking famous. That's not what I chose to be. So then you have to accept it. And you accept it with gratitude. That's why I get very pissed off when I see Jaya Bachchan hitting people. Because you must live in gratitude. Yeah. All my life, when I read those newspapers that my dad gave me, I envisaged this life for myself. I envisaged this. I stood in front of mirrors making speeches. I would wear the clothes and play that I'm a member of parliament who won. I would sit on my study table and give speeches in parliament. I lived this life. I would think of myself, those days I didn't have the acumen to think there might be so many channels. I just saw Doordarshan and later on Star and Mayor Char Channel. I saw myself on a news channel giving an interview. I'm living that life now, right? That's what I visualized and the universe gave to me. I can't be against it. So there will be people who will troll me. And that's what democracy is about. It's fine. वो उनका अधिकार है. I am in that space. I am not one to. I will not live it. I don't want to be 60, 20 years from now, look back and say, there was this match and I didn't take a stand. Whatever the consequences are, I will take that stand. How was like that like Tehseen, that little Tehseen who was reading that newspaper given to him by his father? Yeah. क्या वो कैसा इंसान था? आज I can see, you know. Yeah. Still ऐसे ही था. एक बार मुझे किसी ने मुझसे एक उम्र में एक लड़का बहुत बड़ा था तो बहुत पीटता था तो मैंने एक दिन जाकर डैड को बोला कि बहुत पीट रहा है मुझे तो डैड बोला प्रो फाइट योर ओन बैटल्स तो मैंने ब्रेक उठा के उसको मार दिया फिर डैडी बोला ऐसे भी नहीं फाइट करते सो आई वाज अ टोटल गून एंड इवन नाउ आई डू MMA I haven't fought for the last year and a half but you know I always say this I am a warrior in a garden not a gardener at war. Wow. So I know that I have the strength. I will not. I want to live peacefully and give people around me good life and be happy and make my contribution. But you come after me or my family or my loved ones, and I will be your worst nightmare come true. I will chase you to fucking hell and get you out and get you back on earth, and you'll regret that I got you back. I'll make you regret it. So I tend to stay away from fights because I can't control that. So then I moved away from that. Your brother's like brilliant. Shahzad bhai. Oh, he's mind-blowing. Is amazing. Apart from Sudhanshu ji, he's the best BJP spokesperson. So if both of you sit with each other with no cameras, no media. We don't do that. We don't talk, which is the one thing that I feel bad about. I love him a lot, but we don't. Do you feel that ideology or politics इतनी हावी हो जाती है कि रिश्ते भूल जाते हैं हम लोग? वो उसकी वजह से नहीं, बहुत सारे दूसरे चीज़ थे. This was one reason I couldn't. That what happened with RG, etc. But it's not that. There are other reasons, and I won't go into it. And I do feel bad because for me he was like a child, so I do feel very bad about it. But वो बात नहीं होती है. But I do believe he's the best BJP spokesperson apart from Sudhanshu ji. मैं ये भी पूरी तरह से मानता हूँ कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कि शहजाद को छोड़ दिया. As spokesperson, he is mind blowing. मतलब वो क्या कल ही हम दूरदर्शन पे साथ में थे और पूरा दिन मैं बीजेपी के हर स्पोक्सपर्सन को पीट रहा हूँ सुधांशु जी नहीं थे सबको पीट रहा हूँ मेरे पास ऐसे फैक्ट्स थे जो कांग्रेस के पास नहीं थे और फिर लास्ट में आते 10 बजे की डिबेट शहजाद और फिर मैं वो फैक्ट बोलता हूँ फिर शहजाद बोलता है इस फैक्ट के बाद ये हुआ एंड आई स्टार्ट लाफिंग एंड द एंकर स्टार्ट लाफिंग एंड आई टोल्ड द एंकर ऑन लाइव टीवी ये सिर्फ यही जानता था कि इसके बाद की स्टोरी जो कोई नहीं जानता था कांग्रेस तो पहला स्टेप नहीं जानती थी बीजेपी दूसरा स्टेप नहीं जानती थी सिर्फ ही इज माइंड ब्लोइंग इट्स लाइक नॉट अ फेयर कंपैरिजन बट विभीषण न्यू इट कि कहाँ मारना है
Is it so? नहीं मतलब मैं रावण हूँ. Secret. तो मुझे रावण कह रहे हो? रावण. मैंने ये नहीं बोला आपको. रावण also was like secret is Ravan known to was stud and all. Absolutely. Total dude he was. But no, jokes apart. और नहीं, बात विभीषण का नहीं है. उसने कोई धोखा नहीं दिया मुझे. नहीं, मैं उसके वो context नहीं था. It was like कि a secret known to someone. He's just so hardworking. Yeah. वो, you know, I can, like from here I'm going for a coffee, which your wife, you know, I have to meet a friend who's a content creator. Your wife's been kind enough to coordinate that for me. So I have a life that's beyond. I do this, then I work, then I do my business, and I have a personal life. I have everything. He's only this. He's 20. We came up in the middle of the night, which can happen with me also, but he's like Core into it. He's just like वो अर्जुन कैसे उस मच्छी की आँख को देखता सिर्फ और he's like that. He's mind blowing. Since you are an entrepreneur as well, the mindset of an entrepreneur versus the mindset of a political leader, क्या होता है फर्क? I think nothing. I think a political leader should be like an entrepreneur. Take risks, help people grow, lead. We've had too much of socialist, conservative leaders. We now need people who will take risks. Because अगर भारत को वाकई fourth largest, third largest, second largest economy बननी है with per capita income going up, people should be able to live freer lives. And what does an entrepreneur want? उसको freedom चाहिए. What is the basis of democracy? Freedom. We need to have much more freedom in our country. We have to have much less सरकार in our country. मोदी जी ने कहा था कि more governance, less government. मोदी जी में more government आ गया, less governance आ गया. निर्मला जी आपकी emails पढ़ रही है, आपके WhatsApp chats पढ़ रही है. That is the problem. We need less government, more governance. We need less government intrusion. योगी जी बताते कौन किसके साथ रिलेशनशिप उत्तराखंड में सॉरी योगी जी ने उत्तराखंड में बताते who can live in. वो DM को आप लिखोगे I am living in. UCC. What the fuck, bro? Like, why would you want to write live in? So I think a DM देखेगा this guy and this girl are living in. Like, is that a DM's job or SDM's job? So we need less government in our life. We need more governance in our life. आप कब आ रहे हो? देखो अब समय तो मेरा शुरू हो गया है. अब देखना ये है कि अगले 10 साल क्या. Astrology? No, I don't understand astrology as much. अब समझने लगा हूँ, but of course it's such a big science. मैं तंत्र ज़्यादा करता हूँ, तो तंत्र की वजह से मुझे कुछ चीज़ समझ में आती है जो तांत्रिक विधियों की वजह से, बट वो बड़े मैक्रो लेवल पे होते हैं. ठीक है, तो आपको कोई चीज़ समझ में आती है, पर जब आप उसको एस्ट्रोलॉजी से कंबाइन करते हो, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी समझते हैं और देन दे मेड माई कुंडली एक्सेट्रा. जब आप उसको उन चीज़ों से करते हैं, बिकॉज बट अगेन आई जस्ट से ये गाइड होता है. इट्स नॉट कि यही होगा. सबसे ऊपर आपका कर्म होगा. योर कर्म कैन राइट योर. आप रावण को ही देखो, सारे नक्षत्र उसके पैर के नीचे थे, सारे, तब भी बिकॉज कर्म इज मोस्ट. तो कर्म कैन चेंज योर, इवन इफ यू हैव फीट अंडरनीथ योर फीट, जैसे रावण के नीचे था तो कुछ नहीं होगा. कर्म हैज टू बी मोस्ट. तो कर्म विल आउटराइड इट. हाउएवर दिस कैन बी अ गाइड टू व्हाट यू कैन डू, कैन नॉट डू. इट्स अ ब्रिलियंट साइंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट साइंस. क्या होता है कि बहुत से बार लोग इसको मॉक कर लेते हैं. लोग अभी देखेंगे तो लोग कहेंगे आप कौन सी संभालने में जा रहे हो, बट इसका जो साइंस है, जो हम इसको जिस हिसाब से समझते हैं, जो खास करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गाइडेंस फॉर द फ्यूचर. और बेसिकली क्या है, आप देखो ना, बहुत सारी, आई मीन फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स इवन गो टू वास्तु, व्हिच इज वेरी बेसिक कॉमन सेंस. व्हाई इज द किचन इन द ईस्ट? द सन राइजेस इन द ईस्ट. इट्स कॉमन सेंस. So there are things. Why is it northeast, the entrance of the house? Because again, we have northeast winds and southwest monsoon, northeast, southwest. So they're very common things that were scientific, that created our Vastu. Why was there a courtyard in the middle? Because light should come in, natural light in the house. That got the energy dependence down. So again, it's not, there were a lot of scientific reasons. And again, you go back to everything. Now people say, which I do, 1 meal a day. OMAD. The fuck, हमारे जितने भी संत साधु थे, वो क्या कहते हैं, दिन में एक ही बार खाते थे. So it's just the way you market it. Now, because I'm an entrepreneur, this dude from US said, I've got this amazing product for India, etc. I said, what is it? Neem toothbrushes and charcoal toothpaste, which is great. What did Indians use before? And they told us we are bad, we have to use plastic. And now the same plastic is bad, we have to use neem. And they're selling that to us for $10. So I'm saying not everything is correct. Again, we've got to
We've got to separate. Not everything is right. But we have so much in our culture. So astrology is like that. You take it as a pinch of salt, understand it, look at it as a guide. I'm not saying completely be immersed in it. And then you'll have a better life. But Tantra and astrology is a good combination for me. So कब आ रहे हो आप? समय तो शुरू हो गया है. कब आ रहे हो? समय शुरू हो गया है. समय का सारा समय के ऊपर है. बट समय तो मेरा आ गया. वो पक्का आ गया. कहाँ से करोगे कॉन्टेस्ट? वो देखिए कंटेस्ट कहाँ से कब करना है, बट चेंज तो करेगी देश के अंदर, वो ज़रूरी है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू. Perfect. Thank you so much. Thank you, Divas. Thank you for doing this. Thank you Love for your having energy. me. And जितने आप डायनामिक ऑन स्क्रीन हो उससे ज़्यादा आप ऑफ स्क्रीन हो. Like you know that bubbling energy is like oh my god. Thank you. And I'm up since 4 a.m. And I'll sleep only. And I'm traveling at 12:30. I told you, I'm traveling, so I had to do this now. Respect for you. Thank you, bro. Thank you.